tried it for the next time, the soul was tough to find, or it hid itself in the night shadow of the language, of the experience. Like a fruit on the tree fell not where I wanted, hid itself in a place where it wanted. This is a saying of a modern ಅನುಭಾವಿ poet of Kannada, ಮಧುರ ಚೆನ್ನ. ಬೇಡಿದಲ್ಲಿ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಬೇಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತಲ್ಲ. The fruit fell down, but he desired that fruit wanted to fall somewhere. He desired, but it fell somewhere. This is a kind of experience for a writer when he writes his first writing as such. So I tried for the next only to be my best, first one, and the words which poured out said silently, try for the next one. So thank you very much. And I call upon, see here, there are about 6 writers who are going to speak. There will be 90 minutes. And I think you will have 10 to 11 minutes to cover your experience of first writing. So after 11 minutes, I think Madam will give a call, or I will give you a call, and then we'll then conclude the things. And the first writer whom I call is, I don't know the list of the names here. Sanjeev Paul Dekha. He's a Assami writer. He got an Yuva Puraskar in 2019, and he blends in his writing his personal thing and the political as such in his creative writing. He is an editor of a journal, Alap, also. He's a university professor, and I would like to hear him what his first experience of writing as such. Respected Chair, my fellow writers on the dais and audience. I'm a little bit confused about the topic of today's discussion, because I'm confused which writing experience of mine should be considered as the quote-unquote first experience. So I remember I wrote my very first write-up when I was a student of 4th standard. There was a short text entitled Pani, water. In our syllabus, the text started with this sentence, Mor nam Pani, my name is Pani, water. The scientific features of water as well as its usefulness were narrated in that text. Somehow the non-fictional text struck my childhood mind, and imitating the text, I wrote a short piece entitled Surya or Surya, sun, which was started with the sentence Mor nam Surya, my name is sun. So sentence pattern and structure of the article were purely imitation of the said article. I just put the word sun in place of pani. I remember I wrote the sun's characteristics from my own based on the knowledge I had at the time. So I do not know what the reason behind such attempt of imitation was. Surely it was not for publication, as we had not had the opportunity to read any periodicals or magazine at that time. So when I got admitted to high school, we had the opportunity to stage drama in our school function. In our pledge also, there was a
yearly celebration of Mag Bihu during the month of January, where one act play and other performances were held. I actively participated in those one act play competitions as a playwright, actor, and director, quote unquote. There must be quote unquote playwright, actor, director. I wrote two plays which were staged. Surprisingly, the content of the both plays was highly political and contemporary. It was the mid 90s of the last century, which witnessed the violence of the state as well as the extremist militant groups. The political ambience shaped our childhood emotions, which influenced the creative mind. However, I would like to recollect here that, like many other school-going children, I had a large copy where I wrote poetry, again, quote unquote poetry. But the world of poetry was out of the political and social issues. It was purely an emotional and subjective world. At least at the time, I, a school-going student, understood poetry like that. These were my first creative exercises, but I neither became a playwright nor a poet. The appropriate genre was yet to be explored. After passing my high school living certificate examination, I left my village for district headquarters. As I was from a humble background, I had to carry my studies staying with a family who was originally from my village. For various reasons, those 2 years of my life was very tough time. I was a student of science stream, having bright dreams in mind. But all dreams seemed to come to an end. At that mental stage, adding additional agony in the young mind, our village community excommunicated our family without having any valid reason. So you just imagine, we were excommunicated when I was 17 or 18 years old without having any reason, valid reason. That mental stage you can imagine. So I left my home with a heavy heart for Guwahati in 2004, exactly 20 years back from now. Frustrating in all aspects of my young life, I had to shelter on writing. Now, writing for me was neither to be a writer nor for any name and fame. It was almost like a compulsion of the distressful life. Fortunately, the appropriate genre I could adopt at that moment, which could express my emotions in a proper way. And the genre was neither a play nor poetry. It was the genre of short story. I believe appropriation of right genre to express right emotions in right time is very much necessary, very much important for a writer. As I was in Guwahati, it was easier for me to drop the short story in the office of a famous Assamese periodical titled Prantik. I am grateful to the editorial board of the magazine who published my first short story. I used the word imitation, quote unquote imitation, while sharing the school days experience of my writing something. But becoming an adult, would I be free from imitating or imitation while writing something? The answer is no. Undoubtedly, the content of my story was original. The real life experiences, emotions, all were original. But the genre I chose was not original. Even these genres did not emerge in India. Prior to the coming of the British colonial power, no Indian writers wrote short story, romantic poetry, novel, all these genres we have borrowed from Western literary tradition. I acquired the genre by reading the short stories of the earlier writers. Of course, gradually I adopted the indigenous discourses, narrations, different styles of storytelling. But in the very first story, I could not use those indigenous forms. So I feel lucky that I met a fellow short story writer in Guwahati who helped edit my own fictional text. Some technical things I learned from him. For me, writing is something which comes from the inside, or in other words, writing is the exploration of the self. But at the same time, the role of the outside force,
such as the role of an editor, plays a very crucial role in the early stage of a writer. So I feel lucky enough that I had the opportunity to get encouraged by eminent editor like Homen Borgohain in the early stage of my writing, which made my first writing experience more memorable. Thank you. Now I call upon T. Periswamy. Has he come? So the third writer is Padmini Nagaraju from Canada. She's a poetess in Canada. A minute of introduction, Padmini, before you start. A minute introduction. She has written, she has brought out many poetry collections. One is What It Means to Be a Friend. That's an important collection which got an award actually. The other one is Flower on Epitaph. And a kind of, ए सौभाग्य जैसे होता है उनको जैन दर्शन का एक सौभाग्य जो मिला है, वो सौभाग्य से जो नंदिनी पोएट्री जो लिखती है, उनमें जैन दर्शन का जो फिलॉसफी है वो अननोइंगली इम्बाइब्ड होता है, लाइक अनेकांतवाद जो जैन दर्शन का एक मुख्य दर्शन है, वो दर्शन उनकी कविताओं में और शॉर्ट स्टोरी में मिलती है पढ़ने के लिए. A good writer of Canada, and I welcome to read her first experience of writing. Thank you, sir. Good morning to everyone present here. My name is Dr. Padmini Nagaraju. I'm here to speak about my first writing experience. Representing Kannada from Karnataka. I thank the Sahitya Academy for giving me the opportunity to speak today. My regards to the chair, Dr. Basuraj Kalgudi sir, and all the esteemed speakers in this room. I studied in my mother tongue Kannada medium till high school. When I was in high school, I developed an interest in language and literature, and two of main reasons for this were my uncle, Mr. S.P. Dankirti, and my Kannada teacher named Katimani sir. My love for reading started very early, as my grandfather got me interested to little books of Gita Book House, which were published at that time. The books were an introduction to great men, an introduction to socially prominent personalities, works related to science, and were available at affordable prices. Grandpa used to bring them, and I would eagerly await his arrival. My high school teacher, Katimani sir, encouraged me to become a debater. He never gave me a written speech. He strictly told me to prepare my speech on my own. By discussing the main points related to the topic, because of this, I had to gather materials from various sources to supplement the subject. As of now, there was no Google or social networking sites at that time. So we had to sit in the library and collect content. Though this confidence to read and write independently started building up in me. I wrote first about my mother's father. It was a little story. I used to go to my grandmother's house for a month during the holidays. We did not have idea of summer camps like kids do now. All the children who came from the holiday played our own creative games together with the children there. I did not know that my grandfather had married another woman. Besides my grandmother,
Every morning, my grandfather used to come from that house to our house. He used to eat breakfast here and go to the village market to conduct his betel nut business. In the evening, he would come from that house to our house for dinner and would go to that house to sleep. In other houses, the grandfathers would stay in their houses. I found this to be surprising and asked my grandmother. There was no answer. Amma warned me not to talk about it. Even my friends did not know anything about this. This raised many questions in my mind. So, the first story I wrote then was from east to west. In this, I brought the questions that arose in my mind. What is that house? What is relationship between us and those who live there? Aren't we all together? Why does not my grandfather like other grandfather, but me to bed, put me to bed and tell me a story at night? Thus, I brought many questions that came to my mind in that story. I did not dare show that story anyone. At some point, Katimani sir learned about it, read the story, and taught me my first lessons about story formation, framework, and character development. He never once said that it was childish. Instead, that we have to weave a story. After coming to college, I used to read many popular novels. P. Lankesh was my favorite author at that time. When I was doing my graduation in Chikmagaluru, I started reading Lankesh Patrike newspaper without fail. It was the 80s when the newspaper started column for students. In our neighboring town, there was an ongoing Hindu-Muslim riot where Hindu man had gone missing. No one knew if he was dead or alive. After few months, all the Hindus of that town came together to perform widowhood for the missing man's wife. Despite her opposition, I heard my mother talking and discussion about this matter, and I wrote the same for the student column of Lankesh Patrika. Mr. Lankesh liked my article, and to show his appreciation, he invited me to Bangalore and encouraged me to write. This incident further inspired me to write poems and become an author. When I won several state-level inter-collegiate debating competitions, the prizes were distributed by the greats such as Kuvempu, Purnachandra Tejasvi, and Hama Nayak. Seeing and hearing about such distinguished individuals, I was inspired and I felt the need to take up writing. I wrote 14 to 15 poems in that time. For my college magazine, as there was a restriction to publish only one poem per student, I published my poems under the names of my friends. After I did my MA, I started to get clarity about the method of reading books and the method of their collections. While completing my PhD, I gained further research skills. In 2016, my first collection of poetry, Gelati Aguvodendare, How to Be a Girlfriend, was published. Still, I do not believe all the poems in the books were good. It was my foray into the world of Kannada literature. The confidence I gained through this book was used, which inspired me to further publish 15 more books. If I am known as a female author in Kannada literary work today, the seeds of which I believe were sown as I wrote my first few stories as a youngling to express my talent storytelling skills. Write is a mode of expression. It should be effective. It should be meaningful. It should engage the readers in conversation and discussion. After reading story or a poem, it should make the reader feel the same life transcends all rules, laws, and
doctrines. The every writer should know this. I like to create my works with this knowledge. Having observed many moments, I have noticed the new awakening and serious thinking of women with the Dalit insurgency movements. After I got involved in society, family, employment, the attitude of the society towards women, questioning different forms, the exploitations, awareness, and raising my voice becomes stronger. Articles, stories, reviews by writers like Veena Shanteshwar, Sa Usha, etc. in Kannada have led to the awakening of our latent female consciousness. H.S. Srimati's translation helped me to have more clarity to my work. Critics think that my feminist thought is further clarified in my second collection of poems, Purave Needabekilla, No Need to Give Evidence. Short story collection, Samadhi Melina Hoo, Flowers on Top of Grave, and other works, Uriva Benkige Mayella Bai, Raising Fire Has Many Mouths, and Yedege Benki Biddagina Belaku, Light When Fire Touches the Chest. I share their opinions. Thank you for listening patiently to mine. With this, I end my story. Thank you, Sadar sir. Thank you, Manabaligar sir, and Mrs. Kalgudi sir, and other इधर कौन इधर बैठा है सबको मैं थैंक्स बोलने को चाहती हूँ. Thank you. Now I call upon P. Muhammad Koya from Malayalam language. Yes, come. Namaskaram. Good morning to everybody. I am coming from a forest place from Delhi because basically these islands are coming from the islands, Lakshadweep Islands, but it's economic zone, very rich, and the area also much more than the bigger states of India. I am also from India. Here, before addressing to the main subject, I want to make a request to the academy. While consolidating the languages of all the states, they forget to add our colloquial language, that is Jessiri. But so many books, olden days, so many books were written in our language. But now I noticed that not mentioned our language in any of the academy papers and other places. It may be due to our farthermost place and the people are very silent. Our people are voiceless. So I request the academy to consider in future giving some space to add their language as well as the interest of the local people. Now I come to our subject. Here is about the language itself you are telling, because when we are writing something about a particular place, the colloquial language and the traditional setup of those places should be incorporated. Here, I am very much proud to get a chance to stand before you to convey my thoughts in a short manner.
Academy is considering all the inborn talented writers, and they are also free to express their views and experiences. So I am also very much happy to disclose that when I started my writings, when I was in the school times, at that time what I done was our language was spread in all the islands, but in different way of tune and other things. So I thought, before dying this language, I should make one Nigandu or the dictionary of that language. Then I took 10 years to gather the words, important words from the colloquial languages, and I compiled one dictionary on that. Still, I think it's also not completed. So many some words must be missed. In future, I am thinking to collect again as part of my service. So, like in the mainland here, I could notice that from the conversation of my friends and participants here, they were also having such sort of some problems, and they also using their colloquial languages for writing and also for communicating. But in our place, if our language dies, that means how can we bring back those languages? The words are just like jewels. But instead of collecting these words, I think that we must write articles from using these colloquial languages. We are having 10 islands there in the Lakshadweep Island, 10 islands. Lot of good writers were there in olden days. Now, very less people coming forward for writing their feelings, thoughts, and by way of stories and essays like that. I request the Academy make a voyage to these islands and conduct such programs there. In that case, the people from the mainland, they will get a chance to interact with the people, and they can also pour some knowledge how to develop their language and their systems available in the islands. Our language is called Jesiri. Now what is happening in the publications, people are mentioning Lakshadweep language is Malayalam. I am very sorry to mention here that our language is not Malayalam, our language is Jesiri, and in one island, Miniko Island, they used to speak Mahal, the same language of Maldives. But they got alphabet, everything. It's a mature language, but not in the other islands. But other islands, we speak colloquial language. The style of pronunciation is different. 9 islands, they have their own traditional way of communication. Suppose I will take little bit backward from the subject what I am talking. In our islands, about centuries back, when people are going for fishing, it is covered with the sea, no? When they are going for fishing, they will make hooting for bringing the people to the
speeches. Suppose if they want to hold their vote, not a vote, it is called vodums. Same way, one person will come and blow the shank. Shank, what is called? Everybody can understand what is shank. Then people come and assemble there for howling, for all sort of common works. They used to the same system for assembling the people. Now, modern system adopted there, the traditional system going far away. So, on behalf of Academy, I invite their attention for fostering and procuring the procuring the languages and the traditional languages for the on behalf of government of India. Pardon? Okay. Thank you very much for the authorities who have given me this opportunity to address all my brothers and sisters. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Thank you, sir. And now I call upon Mr. Bhuvon Sana Singh. His first poem actually was published in 1969. He is one of the famous writer in Manipuri. His work for upliftment Manipuri literature as such, and his poems are published from Penguin Books and Oxford as an anthology from Oxford University Press. Actually, I call upon. Sir Thank to you, Mr. speak on Chairman. this. Good morning to everybody. Let me read out my little write-ups. My name is Raskumar Bhubonsana from Manipur. My first writing experience. When I recall the initial days of my writing, it were full of surprises and unhappiness. At the same time, many joyful incidents had excited me. I started writing without knowing even what I was writing. It was around 1965-66 when I was studying in class 8 or 9. I was 13 or 14 years old. I felt an urge to read whatever Manipuri books I could lay on my hands. Reading books other than the school textbooks gave me a thrill, and I started reading whatever books were available. By coincidence, an older neighbor gave me his library card, and I got the opportunity to read many storybooks, novels, and translated works available at the library. Thus, reading books inspired me to try my hands at writing. But still, I could not grasp what is the stimulus and how I got it. Also, I did not know how to express and write about it. Like this, one day, I wrote something on a white sheet of paper and showed it to a neighborhood elder. He could not make out what I had written, whether it was poetry or prose. He sent me away with the advice to read many books of both male and female writers, and also to write again and again. It turned out that what I had written was like a tasty fruit I had put inside my mouth and chew, and then again spat it out angrily. Even now, I cannot make out whether it was poetry or prose, but then it seemed to have given me courage. The most astonishing and difficult moment was when I tried to write down what I feel inside without knowing what to write and how to start with which words. There was that an act just to express my feeling and why I could not keep it suppressed myself. Was that for my self-satisfaction or to take enjoyment by sharing it with others? Still, I could not understand
or fail to materialize why I like to express those my feelings with words. Thus, when I was studying in high school, I used to learn poems in textbook by heart and recite at school function. After listening to songs over radio, I felt that I would be able to write lyrics and started writing. In this way, poetry started to hold my attention. I wrote and sent some lyrics to All India Radio, but not selected. But it encouraged me. It simply appeared to me that the poems published in newspapers and journals at that time were written with words chosen and arranged for the element of accent, meter, tempo, and ended it with rhythm. Along with it, I fell an urge to write experimenting with a new mode of expression and writing. Considering that writing poetry is a very difficult job, I decided to take an interest in writing. In this way, I kept on reading new poems published in newspapers and journals, and my own poems started appearing in a monthly literary journal for the first time in 1969. I was taken by surprise. I still remember how jubilant I was to see my name in print, with my poems written without knowing what is poetry and how to write it. What I had felt in the beginning when I started writing poetry was that I should break away from the existing norms of writing and formats of poetry and try to use new modes of expression as far as practicable. After this experimentation, I had brought many changes to the points of view and expression. How tough it was to find the first word and sentence of a poem. It took many days to write and make a poem perfect in my own sense. Thus, after starting to write poetry without knowing what is this, I continued to write for quite some time and then stopped for a while, only to start again, which culminated into the publication of my first book of poetry in 1991 when I was 40. After that, I have been writing poetry to that without stopping. I have been able to bring out not only 8 books of poetry, but also 5 books of children, including 2 translations. What is poetry? Which I had started writing without knowing. What sort of techniques should be used in writing poetry? I still do not know fully. What is poetry? Why people write poetry? I feel that there is no need to question. What is the use of poetry? I consider that in poetry, as a genre of literature, we human beings mentally conjure up a detailed internal image with the help of a few words and joyously bring it out as an exemplary product of art. In poetry, many a question, how are we? What is our relation between us and our environment? What is its impact to us? And how many more questions and answers are brought out in different modes of expression. Poetry is poetry. It is a magic of words. It is a hymn. It is guarding us. It is our savior. It is an image from the depth of mind. It is the purest reflection of sorrows and happiness of life. It is our bounden duty to appreciate literature. Poetry written for the welfare of mankind, irrespective of time and place, using the choicest words to express after waking up the pros and the cons and conjuring the wide vision. Poetry means the deepest meaning of life with universal and humanistic touch. Thank you all. Thank you, sir. Now I call upon Karen Boro, who worked in AIR for some time. And this lean man has acted in 12 films actually, 12 films. And some of them are in Assamese and few of them are in Bodo. And such a good writer in Bodo language. And he was an editor of Bodo Mouthpiece of BSS for some time. And he's also president of Bodo Sahit Sabha and a good short story writer, dramatist, critic, and a translator. A kind of Sachi of the races. I call upon. Thank you very much. Karan Boro.
Good morning, everybody. Respected chairman, speaker's friend, scholars, writers, and esteemed audience, and members of Saito Academy present here. I am very much glad I have been invited to speak something about this points subject, my first writing experience. Northeast and Southern writers meet. Actually, I am hailing from Northeast, from Assam, Bodoland. We are under Bodoland Territorial Council, under Assam government. So I'm very much happy that basically I'm writing short story and drama. And I had been working in the All India Radio also. In 1976, 78. So I have a lot of experience organizing some social organization and literary forum. So I will tell only Northeast experience, but not Southern. Southern people, they are telling something very nicely explained. So before speak on why I write or my writing experience, I want to say you that my early life was spent in village before I came and settled in city. During my early life in my native village, I had many ups and downs of life. And when I was a high school student, read in the class 9, I wrote a short story on a life in forest. Because first, my thinking was that if I write, then I must read first. That is my motto. Whenever you read, then you can write. So, because I was born and brought up in the midst of nature, so forest nature had a great influence in my life. In fact, our livelihood was mostly depend upon the nature. I had experience of the beauty of spring and summer and digester of floods and poverty, etc. My short story was mostly appreciated by my friends and teachers. It boosted me to continue my writing, and that was a journey, first journey in my life. As you know, the Northeastern region based on multilingual and multicultural and heritage. You know, we have so many tribes, so many clans, so many community in the Northeastern region. During my college life, I had been selected for the editorship of our college magazine. My friend is sitting there, Benudar Busumotari. He was also editor from my tenure, I think. Yeah. Then, since I came from the Dalit community, I am from Boro community. We are plain tribal in Assam. During my college life, I had been selected for the editorship. That is, and I continue to write my short stories. But this time my time has been shifted from the nature and forest to the social mingle of the adult life. And now actually I'm writing on the plight of human society and maximum women. I'm a progressive writer
no doubt. My timing writing is morning after red tea, 2 hours only. And evening, I used to write before sleeping, only 3 hours. And I used to go sleep in 11 p.m. night. This is my habit. Still today, I try to maintain my lifestyle. No. So when I came to the city and joined in Guwahati University for my post-graduation during 1977 to 79, during that period, emergency was there in India. The urban lifestyle and rural life had great intermingled reaction to me. Now I started to write varieties of articles on current affairs in university magazine or different journals and newspaper in Assamese, English, Hindi, Bengali, and Boro. As you know, the Northeast India is very ethnic groups of people, mainly plains and hill tribes, having their own rich cultural diversities and heritage. My eyes turns on many ethnic uprising, movement and violences, which were mainly concerned during that days in search of their reality, sorrows, violence, and solution. I used to write because Manipuri brothers are there in the northeastern region. Entire region was a place of turmoil that time. That is insurgency problem. My nature of writing had been shifted from creative literature to the criticism. Sometimes I used to write against the government also. The way of solution, how to run the government, and this and that. Since I am a student of political science, and since a student of journalism, I have completed my journalism also, diploma in journalism and mass communication from New Delhi. That's why I had been very interested in writing newspaper. But my job was in Reserve Bank of India. As a manager, I have retired from the Reserve Bank of India. In spite of changing trends, I had published 5 short stories books in Boro, 4 translated books, 6 drama books, 3 fiction books. Now I am experiencing to explore my literary interest with the Sahitya Academy to learn, to know, and to experience the diverse literary field of Indian language across the nation. 2 minutes, madam. I will not take much time. Over and above, I like to say something in regard to the condition of the region, northeastern region. Though the region is very sound in flora and fauna, yet the people of the region in hills, under primitive traits, zoom cultivation in the hill states of northeastern region facing a geographical isolation. Still today, communication gap is today. No internet sometimes, nothing communication. Nowadays, this road communication, transportation developed. Zoom cultivation, you know, shifting cultivation in the hill area. If you go in hill area, the Manipuri people, they know. So isolation and biggest, what is called
calamity, as well as economic backwardness, along with problems of transportation and proper communication. So, in our borough, after getting a schedule in the constitution, which Santali is there, Santali language, and Maithili and Boro, in 2023, the language recognized in the schedule only. And after 2005, we have facilitated to get Saito Academy Award, started from 2005 only. So our language is developing stage, and the medium of instruction is up to university. So I will finish now. So in 2003, I joined in a seminar on the topic upliftment of the unscheduled language in the 21st century in New Delhi. So these are my good experiences to meet many eminent scholars, writers, social thinkers, and encourage me writing spirit. Gradually, I used to write articles in local newspapers, and I know 5 languages of the region for this amicable solution of the vexed problems of the northeastern region. I thank Saito Academy for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you. Thank you, Taren sir. Now I call upon the last writer of this session, C. Srinivas from Telugu language, to speak on his first experience of writing. Respected President of this session, Kalgudi ji, and fellow writers on the dais, and ladies and gentlemen, Namaskar. First of all, I would like to thank Sahitya Academy for giving me this great opportunity to be with you all today in this prestigious Festival of Letters. Now I want to share my first writing experience very briefly to you all. And I want to ventilate 1 or 2 points related to my childhood. My childhood paved way for my writing. I learned so many things with times. While trying to place before you regarding my first writing experience, I was literally taken back, stretching into the last 5 decades of my journey. Thanks to the various experiences, circumstances, surroundings, and other influencing factors, which played a crucial role in my path of literary progress. I never really planned to be a writer, but the literary atmosphere around which I was initially and gradually brought up in my home has inculcated in me immense interest in literary activities. I happen to be the youngest kid in my family. Sometimes I used to tell I am a writer of fortune because at the age of 7 or 8 years, I exposed to Kalidasa, I exposed to Bhasa and Bhavabhuti because of my father. He is a Sanskrit scholar. I happened to be the youngest kid in my family and had the fortune of spending substantial time with my father, who happened to be a scholar of 3 languages, English, Telugu, and Sanskrit, which unparalleled proficiency and eminence. His lectures to the students, he has to teach because we are 7 people we are 7 kids. For the great feeding of 7 kids, he has to teach. From morning to evening, he has to teach. His lectures to the students as a Telugu and Sanskrit teacher, for which I am a compulsory listener in the home because my home means only 1 room at that time. His lectures to the students as a Telugu and Sanskrit teacher, for which I am a listener in my childhood, has injected in me a passion for language, ultimately leading to writing. The era of modern Telugu story has really aroused consciousness and social commitment
to fight about various social evils such as gender menace, caste divide, religious fanaticism, exploitation, gender and domestic violence, and related social evils of various kinds, literally affecting the lives of millions of underprivileged and marginalized section of the society. It is not out of the context to add that I am highly and forcefully influenced by reading the works of great writers. Sri Ravi Shastri, Chaso, Guruzada, Sri Sri, Kalipatnam Ramarao, Patanjali. They are the doyens of Telugu Katha of Kalingandhra. I hails from Kalingandhra. My native is Visakhapatnam. Kalingandhra means Visakha, Vijayanagar and Srikakulam district of Andhra Pradesh. Telugu Katha of, Shoke, the Kalipatnam Ramarao and Patanjali, the works of them showcasing its masses, their sufferings, exploitation, and several social ills affecting their lives. To put it more aptly, Kalingandhra is the torchlight as well as torch bearer of Telugu story. I will be filing in my mission without specific mention of the writings of Sri Rachakonda Viswanath Shastri, who has influenced me greatly and has become a real inspiration leading to path of writing. After completing of my post-graduation, I have chosen journalism as my career and served as a journalist for about 3.5 decades in various capacities. The practical and ground and field experience has led me to have an in-depth insight into the lives of cross-section of the society, particularly the misery, agony, sufferings of less privileged and downtrodden sections, which helped me to see the facts of real society around me. I spent countless days and nights literally taken aback by the brutal and inhuman treatment to these sections touching the lowest ebb of humanity. The situation has really pushed me to choose the path of writing, mirroring contemporary social problems through my works to awake the conscience of the society and arouse at least few sensible people to take up the cause of social upliftment. The role and effect great reformist works of our predecessors such as Sakshi of Panuganti, Kanyasalkam of Guruzada, to mention a few works like Joseph Edison's The Spectator, are the true testimony to show as to how writing can influence the brighten up the lives of millions of fellow human beings. With the spirit of great examples cited above, efforts in this direction has resulted in heralding my first story, Dalapatirtham, depicting my agony and anguish about things around me, about which most of the society are not concerned. My short story, Dalapatirtham, depicts the agony of the people carrying the night soil on the heads, insulting the basics of human dignity and honor. It is nothing but the sheer exploitation of the fellow human being in its ugliest proportion, depicting lowest ebb of human dignity. Dalapatirtham was followed by Palamma, Kappastambam, Udukubellam, Konpala Dibba, etc. Besides dramas like Garbhagudi Majority, the latest in the series is Munniti Geetalu, a novel depicting fishermen, their troubles and miseries they are exposed to their day-to-day struggles. Let me humbly submit finally that I am not a leftist, nor a rightist, or a centrist. I do not believe in any ism. I am a humanist. I want to be as a humanist. I am trying for this. My commitment is always to the humanism. I confidently believe that we as a drop of in the ocean of humanity can contribute what little we can for bettering the society and human decency and values in the process of building a new world and society in an humble way, just like a squirrel in a great epic of Ramayana. This commitment detailed in the foregoing experience has made me a writer and will continue to do so in the days ahead. Thank you, one and all. Thanks a lot. I thank all the writers who spoke on their first experience of writing, actually. I'll just summarize within 2 minutes of what they spoke, actually, and what was the distinctiveness of the writing, actually.
I am really pleased to hear that there is no such thing as a first writing. All of them spoke in one language that there is no first writing experience as such. Writing is a process. All of them clearly said that writing is a process. And of course, a good writer is on the path of discovery of in a new language, a new experiences as such. And all of them have done in their creative writings. The other thing that I felt when I heard Srinivasan and then Padmini, that writing of Southern writers most probably is a language of inclusiveness. They include many societies in their language of writing. And I heard Mr. Tarun Boro, and his language of writing was exclusiveness, actually. You start talking about a community, a tribal community, and their struggle, and see the voice, the language that he spoke. He showed many people here who belong to the tribal community, showing that all of us are one, and there is another world which is exclusive of us. And their writing, especially the tribal writing of our times, create a language of exclusiveness, which came out from the talk of Taran Boro as such. I congratulate all the writers on behalf of Academy for talking their experiences in a very matured and literary way. Thank you so much. Thank you, Shri Basaraj Kalguri ji. And you have so rightly and so beautifully summarized the entire session, whether these are voices that come from inclusivity or exclusivity. The purpose or the destiny of every voice is to find itself, to find its existence. And it was wonderful to hear the experiences of the first writing and where it springs from, because the human experience, the personal experience, the experience of the culture, of the parents, of the spaces that one grows up in affects the way one is driven to writing. Thank you so much to all the writers for this lovely session. We would also like to have a photograph for our album. So I request you all to just come forth on the dais.
पूर्वी और दक्षिण के कवि अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे. To chair this session, may I request Sri Rajen Toijamba to join me on the dais, please. Sri Rajen Toijamba is a Manipuri writer. He is former head and professor Manipuri Department, Manipur University, Kanchipur. His published works are Sahitya Amadi Natki Varinghara, Manipuri Dramada Realism, People's Theatre Shumang Leela, and A.G. Imfalda. He is convener of Sahitya Akademi's Manipuri Advisory Board and is a recipient of Maisnam Oja Tombi Critic Award by Sahitya Parishad Imphal and Sahitya Akademi Award for his play Chahi Tarit Kuntakpa. May I also request on the dais Srimati Tulika Chetia Yen, who is an Assamese poetess. Some of her works include Mauntar Atmopat, Akhak Nothoka Rati, Hanhir Akhak Premor Akhak. Besides this, she has translated books, edited works apart from more than 1,000 articles published in reputed newspapers and magazines. She was awarded the International Tathagat Sujan Saman Shatabdi Award and Writers Felicitation Award. May I request Sri Shakti, who is a noted Tamil writer and poet, to come to the stage, please? He's not here. Sri K. Srikant Reddy. He's a Telugu writer and poet and has 7 volumes of poetry to his credit. He is the recipient of the Katha Award for the Best Fiction of 2002 for his story, The Silent Song. Sri Newton Conwar, aka Newton K. Basu Matare, who is an Assamese and Bodo poet and writer. He is the recipient of the Sahitya Akademi Yuva Puraskar, Gojali Yuva Kobi Award, and Lekhok Sambardhana from the Department of Higher Education, Government of Assam. May I now request Srimati Anamika Anu, who's a noted Hindi poet, writer and translator. She has 2 collections of poetry to her credit. Her poems have been translated into Punjabi, Bangla, Marathi, Odia, Kannada, Nepali, Gujarati, English, and Malayalam. She is a recipient of various prestigious awards, including the Bharat Bhushan Agarwal Award for Poetry, the Raza Fellowship for writing the biography of Padma Vibhushan Tijan Bai, and the Kedar Nyas Mahesh Anjum Award. May I now request Sri Subbu Holiar, who's a Kannada poet, to join us on the dais. Being an activist of Dalit Sangharsh Samiti, Sri Holiar has crafted his poems with real concerns for the deprived people and also representing the concerns of the Samiti. In his important poems, he has sketched the pains and deep feelings of the commoners, especially of Dalits. The original thought of Baba Saheb Ambedkar, Gandhi, Loya, and Marx are the soul of his poetry. Last but not least, Lenin Kumancha, aka Leshram Lenin Singh. I request you to join us on the dais, please. He's a noted poet and writer in Manipuri. He has 3 poetry collections besides 2 edited books to his credit. Sri Leshram is a recipient of the Binod Kumari Literary Award, Dr. Somen Award, and Sahitya Akademi Yuva Puraskar for his poetry collection, among others. We now hand over the mic to our chair. Would you like to speak from here? Sri Rajen Toinjappa. Good morning, everyone. First of all, I would like to express my gratitude to the Sahitya Academy, our respected President, Sri Madhav Kaushik ji, and our dynamic Secretary, Dr. K. Srinivas Rao ji, for inviting me as a chairperson of this Northeast and Southern Poets Meet.
At the very outset, I would like to extend a very warm welcome to all the poets who are assembled here from different languages of Northeast and the southern parts of India. Along with learned invitees, ladies and gentlemen, in this context, I strongly feel that the organization of the Northeast and the Southern Poets Meet at Sahitya Academy, New Delhi is highly relevant and meaningful. And for this, I would like to appreciate the intention of the planners of the Sahitya Academy Festival of Letters, world largest literature festival going on from 11 March 2024. Now let us start our poetry reading program. For this program, we have 7 poets. Their name is, one is Assamese Tulika Setia Jain. One is from Bodo, Newton Basumatari. Next one is from Kannada, Suboliar. The next one is from Kerala, Anamika Anu. Another is from Manipur, Lenin Kumancha. The remaining 2 poets are Sakati, Tamil, and K. Shrikant, Telugu, respectively. Now, I request Assamese poet Tulika Satya Yen for presenting your poems. गुड मॉर्निंग। मैं उस पावन धरती से आई हूँ जहाँ सूरज पहले उगलता है। मेरा मदरलैंड है, जहाँ मैं जन्म हुआ हूँ, वो है अरुणाचल प्रदेश। मैं उस पावन धरती से आई हूँ जहाँ नारियों को पूजा अर्चना और अभिनंदन करते हैं, जहाँ माँ कामाख्या का मंदिर है, जहाँ शीतला देवी है। मैं उस धरती से आई हूँ। मैं उस धरती से आई हूँ जहाँ प्राचीन काल में ज्योतिष के शिक्षा देते थे। उस धरती से मैं आई हूँ जहाँ प्रेम का भावना होते हैं। जब हम लासित बरफुकन, मूला गाभरू, जयमती की वीरता की कहानियां सुनकर देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का भावना जागृत होता है। मैं उस धरती असम से आई हूँ। सबको मेरा सादर प्रणाम। पहला पोएम मैं आसामीज में पढ़ना चाहती हूँ। সেউজীয়া সোণৰ দেশ। ইকান সিকানকৈ বাগৰিল সাধু কথাৰ দৰে এখন সোণৰ দেশৰ কথা। সোণ আছে, ৰূপ আছে, হীৰা আছে মাটিৰ তলত, কোদাললৈকে কৰিব আমি চল। সোণোৱালী সপোন এটা বুকুত বান্ধি ৰ'দ ভাল পোৱা মানুহৰ সমদল এটা আগবাঢ়িল। ঝকঝক উকিৰ শেষত ভাপ নাও অথবা জাহাজ অন্যথা খোজকাঢ়ি আহি থাকিল মানুহবোৰ। অনিৰ্দিষ্ট এক যাত্ৰাৰ মাজত সপোন ভাগিল। যন্ত্ৰণাৰ শেষত প্ৰদীপ জ্বলিল। ঘৰ নাই, ভাত নাই, হাতত শিকলি, ভৰিত বেৰিয়া, চাবুকৰ কোবত লক্ষ্মীৰ যৌৱন উলংগা হল। বগা ছালৰ মানুহবিলাকে তাইক আঁচুৰিলে, ৰেপি ৰেপি নিমখ দিলে, তেলত দিলে, জঠৰ হৈ চাই থাকিল বুধুৱাই। প্ৰতিবাদৰ উত্তৰ যে মিত্ৰ। হেৰুৱাই থৈ সপোন, হেৰুৱাই আপোন মানুহ, বন্ধকত থৈ আত্মা মানুহবোৰ আহি থাকিল। সোণৰ দেশ আহি পাওঁতে পাওঁতে মানুহবোৰ বোবা হৈ পৰিল। লাহে লাহে চাবুকৰ শব্দত ৰাতি পুৱাবলৈ ধৰিলে। অৰণ্য ভাঙি ধাননি পথাৰ গুচাই এটিকলি দুটি পাতৰ মাজত সপোনৰ শিপা মেলে। শিৰিখৰ ছাঁত প্ৰেম হৰে, স্বদেশে ৰিঙিয়াই মাতিলেও, ফাঁকি দি আছাম আনিলেও অসমৰ মোহে আৱৰি ধৰে।
নৈশব্দৰ আকাশত মাদল বাজি উঠে। গৰমৰ ৰাতি অনাখৰি অৱহেলিত মানুহখিনিয়ে ঝুমুৰ নাচি নাচি ভাগৰি নপৰে। পাগলা বজাৰত শাৰী খাৰু মণি কিনোতে ভাগৰি নপৰে শাৰী আপি শক্তিমান সিহঁত। কোনোদিনে ভাগৰ নলগা সুখিত লাঞ্চিত এটা জাতিৰ নাম বাগানীয়া। ফিকা চাহত নিমখ দি খোৱা এটা জাতিৰ নাম বাগানীয়া। মানুহ নহয়, ইহঁত যেন ইতৰ প্ৰাণীহে। ধূমকেতুৰ হাততালিত হাৰিয়াত বিষ, ওঠত বিষ, বুকুত বিষ, উচুপনিত উজলি উঠিছে মৃত্যু উপত্যকা। আন্ধাৰ নাই, পোহৰ নাই, চাৰিওফালে জমদাকিনীৰ কিৰিলি। সেউজীয়া সোণৰ দেশত সাপ আৰু জখলাৰ খেল। সাপ লুডু খেলোতে সোঁহাত বাওঁহাত হয়, বাওঁহাত সোঁহাত হয়। কি আজব এই ট্ৰাফিক মেজিকৰ মাজত নিশেষ হয় জ্যোৎস্না বিভোৰ মন। পাতা তোলা যেমন তেমন কোদাল মাৰে টাংগো, ফাঁকি দিয়া আনিলে আছামগো। ফাঁকিতেই আৰম্ভ জীৱনৰ বুৰঞ্জী, ফাঁকিতেই শেষ তাম্বৰণীয়া মানুহৰ এপিটা। मैं खुद हिंदी में लिखने के लिए ट्राई कर रही थी, तो हम लोग हिंदी सिर्फ हम लोग क्लास 1, 2 और 3 में पढ़ते हैं, बाकी में हम लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं। फिर भी हम कोशिश किया है हिंदी में। इम्तिहान प्रेम की कविताएं हैं। जरूरी काम है लेकिन हर दिन भूल जाती हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है बताना भूल जाती हूँ। तेरी गलियों में घूमना अच्छा लगता है, रास्ते याद रखती हूँ ठिकाना भूल जाती हूँ। इतनी सी बात मेरी लोगों को अच्छा नहीं लगती, मैं नेकी कर देती हूँ पर जताना भूल जाती हूँ। दीवानगी देखो जरा उसकी, वो मुझ तक आने की राह साता है, इश्क में सौदे में, लेकिन वो सदाई मुझे ही गवा साते हैं। आवारा बादल और बदलता मौसम सा है, खुद वो मुझसे मेरी वफा और मोहब्बत का इम्तिहान चाहते हैं। हे जिंदगी, दूसरा पोएम है हे जिंदगी। मुझे अभी खोने का डर नहीं, सबका दिल रखते रखते मैं खुद ही खो गई। मुझे अभी खोने का डर नहीं, सबका दिल रखते रखते मैं खुद ही खो गई। सामने समंदर था, मैं कागज की कश्ती लेकर खड़ी थी। समंदर तो नहीं जानता तारों जैसे है मेरा लाखों सपने। टूटते हुए तारों की तरह बिखर जाते हैं सपने, फिर भी जैसे एक हिरन शीतल सरिता की जल पीने को प्यासा है, ऐसे ही ये जिंदगी तेरी तलाश में मैं प्यासा हूँ। मैंने देखा अजनबियों ने खेत जलाकर राख किया, अपना बहू बेटियों को नग्न करके बाजारों में नीलाम किया। सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार करके घर घर में सीता जलाया, तब भी मैं मौन ही रहा। दादी माँ ने बचपन में बोली थी, जिसे देश से प्यार नहीं, घास फूस की तरह जीते और मरते हैं। राम राज्य में सीता की ही अग्नि परीक्षा होती है। कृष्ण साथ हुए तो क्या हुआ, उसके बावजूद भी द्रौपदी का वस्त्र हरण का प्रयास हुआ। सामने समुंदर है ये जिंदगी, और देखो मैं कागज की कश्ती लेकर खड़ी हूँ। सामने समुंदर है, देखो मैं कागज की कश्ती लेकर खड़ी हूँ। 3 लाइन के एक छोटा सा पोएम, प्रेम। यदि तुम मेरे स्पर्श से जीवित हो जाओगे, यदि तुम मेरे स्पर्श से जीवित हो जाओगे, तुम्हें मैं स्पर्श करूंगी। धन्यवाद। Thank you, Tulika Setia Yen from Assamese. Now, the next one I call upon Niton Basumatri from Bado. Niton Basumatri. सभी को नमस्कार। मैं बोडो लैंग्वेज में वो कविता पढ़ना चाहूँगी, बाद में मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन कर।
आबै आबौ आरो आं दाउज्ला गिसिरनाय समनिफ्रायनो हाल हुरननाय हाग्रानि जुनार मैहुर खालामनाय आबौआ माब्लाबाबो सुथुरजों दावहा होफेराखैब्लाबो जिउनि दावहायाव थै-थां जुजिनाय आं नुदोंमोन। बेखायनो जानांगौ गांनाय उखैनायनिफ्राय उदांमोन जेब्लाबो। गोलोमदैजों सुस्रानो रोङोमोन सान्दुं खामनाय मेंग्लिनाय सोलेर। अखा हादैजों सोमखोर आबादनि उदां सिमां नुनो गोरोंमोन। उदांस्रि जिउखौ आबौमोना खुंनायखौ आं दाबो गोसोखाङो गले गले। उदाङै रायज्लायनाय, उदाङै मिनिनाय, उदाङै मावनाय दांनाय। आबौनि रावजों जिउनि मिथिंगायारि खान्थि। आबादानो जिउ, संसारानो सोदोमस्रि। आं नाथाय बे खान्थिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गोबां खान्थि सोलोंनांबोदों। सम लायै सम जिउ बादि बिगुर गुस्लायदों, सानस्रि सोलायबोदों। गुस्लायनाय बुब्लिनि मोनदांथिजों दा आं सासे राफोद नोगोरारि। आंबो गामियावनो उजिबोदों। अखा हादैयाव दुद्रु दुद्रु गेलेबोदों। सानजौफुनि सान्दुङाव मेगन फोहेरनानै नायनो सोलोंबोदों। गथ'सा बैसोआव मोसौ गुमनाय, लोगोफोरजों मिनिनाय रंजानाय। बेखायनो जानांगौ आंनि सोलेराव दासिमबो दं हानि मोदोमनाय। नोजोराबो समायना बिफां-लाइफां, दैमा-दैसा, आबाद फोथारनि नुथायजों। गोसोआ खांसोर गाब गानाय। सोहोरनिफ्राय आं गेजेर गेजेर न'आव थांबोला आबैया आंखौ सोङोमोन आंनि मावफारि एबा आंनि थासारिनि सोमोन्दै। बे सोंथिनि फिन होनो नाजासेयावबो गले गले आं आवबा जाफ्राङोमोन। मानोना सोहोर मोखां जाबोनायनि उननिफ्रायनो आं नुफेराखै सावननि फोथार, जोमै बिरग्लांनाय निला गाबनि उदां अख्रां। नुफेराखै खासि बिबार, मान्दार बिबार। मोनदांफेराखै सोनाबनिफ्राय बारनाय मोनाबिलिनि खोलो खोलो बार। खोनाफेराखै दैमा गाथोननि फुंबिलियाव दाउफोरनि मेथाइ रोजाबनाय। नैबे सोहोराव सोरांनि मेगनफोरा सायफुनानै थायो। गोजा, गुफुर, गोमो बायदि गाबनि सोराङा आंखौ गोजोनै दान्दिसे उन्दुनोबो होआ। आबैनो आं माबोरै खिन्थानो आंनि खन्थाइफोरा अरनि सालायजों सोला जानाय, मेगन गोसा मानसिफोरनि नोजोरजों खामफ्लेजोबनाय। बोथोरनि गुमुर मोनफेरै आंनि सोलेरा एसेनि आर्टिफिसियेल बारजों रानसावजोबनाय। आबैनि नोजोराव आंनि सिथ्लानि उखुमब्रियानो मुलुगनि बयनिख्रुइबो समायनासिन सिख्लामोन। सोहोरखौथ' नुफेराखै आबैया। बेवहाय गोमोन फिथाइफोर बादि रेदें रेदें थायफुनानै थायो समायना सिख्लानि मोखां गन्थं। सोरनि आगान सुरफानो, सोरनि रावखौ असे होननानै फोथायनो, सोरनि नोजोरखौ गोसो होनो, सोरनि आखायाव आंनि सिमांफोरखौ गथायनो, सोरनि गोरबोआव होलेरनानै उन्दुलांनो। आबैनि रावजों आं दा जेन्थेर मुगासिम सफैबाय। नाथाय आं आबैनो खिन्थानो रोंफेराखिसै माब्लाबाबो आंनि सम आरो आबै आबौनि समनि फारागथिखौ। English translation. My grandparents and me. Plowing in the morning by getting up with cockroaches, hunted wild animals. Grandpa never fought against enemy. I've seen that he fought vigorous fights to survive. Perhaps for that he stood high, as he was free from thirst and hunger. He knew to shower his perspiration, dreamed a free dream of the green grains, its rain and wine. I still remember how my grandpa existed freely, talked freely, laughed freely, worked in freestyle.
The words of Grandpa about natural phenomenon were the cultivation is life, civilization of the family. But other than this, I have learned many ritual too. Time to time, senses like snake skin, sense the way of life. I'm the right citizen with changing situations. Me, to born in village. In childhood, I played with mud and rainwater. Learned to stare with midday sunlight, playing with my friends, taking cattle to the grassland. I have never forgotten the smell of ripened stalk of paddy, the sand of mud, which the pig, chicken, goat, the times of the summer related with life. This is why perhaps the odor of soils covering my body. The site is also beautiful with plants and trees, river, river in behind green fields. The mine was covered with the coenzyme. While I returned from city, my grandma used to ask me sometimes my list of activities or my situations. Often tried to answer the queries. I became dumb because walking towards city, I did not see the fields of sound, did not celebrate the blue sky covered with flying clouds, could not see the catkin flowers, modern flowers, could not feel the cool winds blowing from the west in the evening, would not hear the sweet songs of birds in the mornings. Grandma taught me to play every time with sand and dust in the sunny days. Grandpa rehearsed me to face with the harsh reality of life. I've never seen rearing silkworm, spinning loom, and sewing the threads and transforming dreams into a lovely indigo. In this city, the light of eyes are always wakeful. The colors of lights never let me go to sleep tranquilly. How can I tell to my grandma that my poems are licked by the fire, burnt down by the outlooks of envious people? In the air-conditioned room, my dried up body never could feel the changes of weather. In my grandma's outlook, the moon is our courtier was the most beautiful girl in the world. Grandma is never been in this city. Here, beautiful girls are wearing like plentiful ripened fruits. Whose footsteps should I follow? Whose language should I choose? Whom to love? Whom to bestow my dreams? On those soldiers should I lean my head? In my grandma's outlook, I have transformed from the era of spinning wheel to the era of technology. But I never could tell to my grandma the differences of her era and era of mine. My second poems. आरोबाव खेबसे उन्दुस्रिबाय गंसे मन्दिर मोन्थोर जारिनाय अर आरो सिरिस्राय मोननैसो बुब्लि उखैनायखौ थोरसियाव दोनब्रबनानै सोरगिदिं होंगो दोंगो दावबायारि नोजोर हाजो थिखिनियाव थानाय
गोजा फिरफिलाखौ थांखिनानै लैहोर लैहोर दावखोबोयो मानसिफोरा। अन्थाइनि लंथाइखौ सिबिनाया मानसिनि मोनसे हुदा, फोथायथिनि मुलुग। आबुं नङा, नाथाय मानसियानो लुनाय बेयो गंसे मन्दिर। सोरजिगिरिखौ थांखिनानै मानसिफोरा लाबोफायो दाहानि थफ्ला, पापनि सोलेर, नाथाय जोंनाव गुमुर थाया, मन्दिरनि सोरजिगिरियादि मानसियानो। बोथोरनि उनाव बोसोर, मुगानि उनाव मुगा बारग'लाङो, इसोरा नाथाय सिरि मोननो रोङा। मानसिफोरनि होंगो दोंगो आरो फेलें जानाय नोजोरफोरा मेंग्लिहोयो मन्दिरखौ। दान्दिसे दोम उन्दुहाबनाय बे मन्दिरा गाबोन सिरि मोनफिनगोन फुजारिया दामनाय गाथानि सोदोबाव। गोदान आरज, गोदान मिजिं, गोजा गोथां बिबारनि सानेरनाय। आरोबाव खेबसे उन्दुस्रिबाय गंसे मन्दिर आरो फोथायथिनि इसोर। थारैनो गाबोन सिरि मोनमारनायमोनब्ला आं फैफिनगौमोन फोरबोखौ बोलि होनायनि रादायजों। English translation. The temple is slumbering again. Mantra scented fire and few tranquil moments, putting the hunger on the plate, surrounded by the wondrous eyes. Aiming a red flag, pilgrims march towards a hilltop. Worshipping stone sculpture is a custom of thoughts. A wall of trust is not enough, but it is a temple erected by the people. Aiming the god, people bringing the baggage of pity, a body of sin, but we forget the secret that the creator of the temple is people only. Year after years, era after eras, but the god never wakes up. Throngs people and their failure sights make the temple tired. Tomorrow in the morning, the sleeping temple will rise again by the ringing bell of the priest. New hymn, new hopes, dances of lovely blossoms. The God of trust and a temple has slumbered again. If a God wakes up tomorrow, I would be coming with the promises of sacrificing my heart. Thank you. Thank you, Newton Basmaturi. Wanting, dear learned poets, if you have in English version, please read out in English. Yeah. Actually, we are coming from different parts of India. We don't know our own language because this is very confused. How your poetry is narrated to me. Next, I call upon Sri Subha Holier, Canada. Fine, good morning to all of you. At first, I say I am very thankful to Academy of Letters and persons who gave great opportunity to participate in this festival of literature. I am from the land of Basvanna and Saranas who dreamed to the society of equality at first in the world history even. I am never forget the remember the great scholar of the world, Dr. Babasaheb Ambedkar, who gave me the confidence to stand in front of you and gave the strength of to live the life with self-respect. I would like to read two of my poems.
ಮೊದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪದ್ಯ ಓದ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳಿದನೆಂದು ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ತಾಕಿಸಿಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ. ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಉಸಿರಿನ ದಾರವನ್ನ ಸೀಳಿ ಸೀಳಿ ನೋಡಿದೆ. ಸೀಳಿದಷ್ಟು ಸಂಕಟ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾದಂತೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಸೀಳಿದ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ತೇವದ ದುಃಖ ಸಾಗರವೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆರಳಿನ ತೂಕ ಲೋಕಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿನ ಮೂಟೆ ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಕೇಳಬಹುದೇ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಈ ತಲ್ಲಣದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ? ಸುಖ ಮಲಗಿದೆ, ಹಸಿವು ದುಃಖ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ, ಕರುಣೆ ಬಂದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಉಸಿರಾಡದ ಉಸಿರಿನಿಂದ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೇರಿದ್ದ ಈ ಉಸಿರು? ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಲು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳಿದೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಎನ್ನುವ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಉಸಿರಿದೆ ಗೆಳೆಯ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲೆಗಳು ಅಲುಗಾಡುವುದನ್ನ ಈ ಉಸಿರಿನ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್. Please share my concern to everyone. How many birds have been touched our ears with a bundle of breath this morning? I seized the thread again and again of the breath. When was full of painful sorrows. When I did this, I noticed the pain of doubled and became countless. The finger that seized the thread of breath is now full of agony. Covered with the sea of sorrows even. Surprisingly, the weight of the finger was equal to the amount of salt, which can be shared with the whole world. In this full critical condition, how can ask anybody else? How are you guys? Happiness is sleeping. Hunger and suffering are moving. Tears have been killed. Mercy is sent back behind the bars. That is enough for now. I am completely okay now. By talking a breath which you people have breathed. Does it belong to anybody? No one has the right to ask for the same. Please share my concern to everyone. In this voice, there is a breath which belongs to everyone. My dear friend, have you seen any leaves of the tree which was waving to witness the breath? One more. Second one. ಮಳೆ ಬರಲಿ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ. ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ವೈದಿಕ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಮೆದುಳ ಕುಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು. ಇದ ಕಂಡ ಶೂದ್ರಾದಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೃದಯವನ್ನೇ ಹೊರಗೆಳೆದು ದೇಹದಿಂದ ಹುಟುಕತೊಡಗಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಾತನಾಡಿತು. ಪ್ರಿಯ ಶರಣರೂ ಶರಣರಾಗದ ಶೂದ್ರಾದಿ ವೈದಿಕರೇ, ನೋವಾಗದಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅಂದೆ. ನನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಕ್ಕತೊಡಗಿದವು. ಸುಂದರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವಾದೆ. ನನ್ನ ಅಸ್ಥಿ ಮಾತನಾಡಿತು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿ ಬಿಡಿರಣ್ಣ ಅಂದೆ. ಅಸ್ಥಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದವು ಹದ್ದುಗಳ ಹಾಗೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹರಿದಾಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇರುವೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು ನನ್ನ ಉಸಿರು.
ಹೂವಾದೆ, ಹಣ್ಣಾದೆ, ಮಣ್ಣಾದೆ, ಅನ್ನವಾದೆ, ಅರಿವಾದೆ, ಉಪ್ಪಾದೆ, ತೆಪ್ಪವಾದೆ, ನೋವಾಗದ ಚಪ್ಪಲಿಯಾದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಕೇರಿ ಯಾವ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು? ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆಂದು, ಸೋತಿದ್ದೇನೆಂದು ತಲೆ ಎತ್ತದೆ ತೆನೆ ಬಾಗಿದ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಲುದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಹಬ್ಬ ಈಗ. ದುಃಖದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಗಂಡಿಸರಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ನೋವಿಗೂ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡ. ಒಡೆದು ಹಾಕು ಗಲ್ಲವನ್ನ. ಪುರುಷೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಗೆಳತಿ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಒಳಿತಿವೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಕೇರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೋ ಉಪಗ್ರಹದ ಜೀವಿಗಳಂತೆ ಸದಾ ನಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಖುಷಿ. ಇವು ಚಂದ್ರ ಬೆಳಕನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ. ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇಶದ ಜನರ ಕಾಯಿಲೆ ಏನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬೇಕಾಗಿರುವುದವರಿಗೆ ಮುಗುಳ್ನಗೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಕ್ಷಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ತುಂಬು ತೋಳಿನ ತೋರು ಬೆರಳಲ್ಲಿ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ ಗೆಳೆಯ. ಮರೆಯಲಾರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ. ಮಳೆ ಬರಲಿ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಹೊಡೆದವರ ಕೈ ನೋವಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಇರುವೆ ಈ ನೆಲದ ಹೂವಾಗಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್. Let the rain fall on the house of all over the world. A pretty lovely Vedic bird was biting my mind. After watching this, the Shudra birds pulled out of my heart from the body and stinging again and again. My heart had started to speak. Dear Shudras and Vaidikas, whom never carried by Charanas, let me not to be get pain to your freak, I said. They started to bite me again and again with full of againish. I became the beautiful skeleton. My skeleton had started to talk. Please leave me if your stomach is full. Dear brothers, they lifted my skeleton and went away as eagles. My breath had sickened the body of an ant, which was the crawling here and there. I am transferred to flower, fruit, soil, food, knowledge, salt, boat, and even the slippers, which never gives the pain. Now tell me, to which planet my colony belongs? I am stepping forward in the footpath of Madhyama Marga by bowing my head like a pedal, even after I won or lost. This is the season of fruits. In the shop of sorrows, tears are for sale. Don't think that your pain get valued. There are men on your cheek. Break your cheek and make time for your tears, my dear beloved. In this world, each and every child of all house will cry, but the kid of our colony have been laughed all time like these are the creature from the other planets. After the watching the kid of other colony, and I feel very happy. After watching, these kids are catching the moonlight. There is no need of
blood test. There is no need of blood test. I know what is the disgust of the people of people of our country. They need only the smile and tablet. There is no need of blood test. I know what is the disease of these people of our country that need only a smile and a tablet. Baba Sahib showing the witness with his fingers of his full arm, but we closed our eyes, dear friend, and sat without scare. We did not forget the history. Let the rain fall on the houses of all over the world. I pray. Let the hands of people not get pained. Who slapped me? I will be here always, like a flower of the earth. Thank you. Namaste. Thank you. Subaholier. Wanting our remaining poets, I would like to inform you that your poem read out only within 10 or 12 minutes. Please read out. Now I call upon Anamika Anu from Kerala. She is writing in Hindi. Now Anamika Anu, Kerala. नमस्कार। हर बार चौराहा खा जाता है सड़क को। निर्गंध जंगली फूलों को उन आंखों ने कुछ इस तरह से देखा कि वे अनुदित हो गए नए रंग में। यह रंग प्रवेश है। तारीफ से मजबूत जाल और प्रेम से भरा मछुआरा दूसरा कोई नहीं। 13 से 40 तक जो झील ख्वाब में आती रही, उस झील की गहराई में तैरना था। झील का पानी देह जितना गर्म, देह जितना ही ठंडा था। वह नीलकमल और उसके जिन तंतुओं पर लिखते रहे हम कविता, उनकी पंखुड़ियों को खोलना भर था। अब सुंदर लगने की चाह वैसी नहीं थी जो हुआ करती थी 21 से 26 के बीच। चश्मे से लगकर कागज खरखराने की उम्र में घुसते ही टपकने लगती है वह झोपड़ी भी जो बनाते बनाते बनी है 10-1 साल की कोशिशों में। वे जो चले गए या छूट गए, उन्हें बूंद बूंद बस टपकना है कागज की थाली में, चश्मे के भीतर जो कटोरा खाली है उसमें। भूलने लगते हैं हम सब कुछ लोगों की हंसी याद रह जाती है। उसी तरह जैसे ठंडे के उतरते ही गोंद के लड्डुओं के मर्तबान में बचे रह जाते हैं थोड़े से झरवे, उतनी सी ही हंसी। किशनभोग, गुलाब खास, पिपरा का खाजा, बदलाघाट के पेड़ों की स्मृतियां उतना ही बचा रह जाता है नानी दादी गांव। बस मिट्टी सी साए साए करती है विस्मृति में भूत सी स्मृतियां। बरहर के पेड़ जैसे उदास खरी नदी के तट पर गीली माटी और तलवे पर सिहर कर फैली ठंड। ऐसे में उसकी भूरी आंखें उगाती है चकते सी इधर उधर। अब चीजों को सहेजने समेटने का मन ही नहीं करता। बिखरे रहने में सुकून और गहरी राहत है। कभी कभी पन्नों की शोर में एक कुआं याद आता है। स्टेज से भाषण देकर उतरती बच्ची, फ्रॉक में माइक्रोफोन लगाती लड़की, कैमरे के सामने बोलती लड़की, कागज पर लेख लिखती, अपने प्रमाण पत्रों को फाइल में सजाती, अपनी डिग्रियों को निहारती, अपना भोजन रिक्शे वाले को खिलाती, जोर से साइकिल चलाती लड़की। वे सारी लड़कियां चली गईं जाने कहां। 40 साल से पीछा कर रही थी, अब है ही नहीं कहीं। पहले लगता था प्यार कोई दूध में नहाई चीज है, बाद में लगा स्वप्न में नहाई। अब जाना ये गहरे डर में डूबी दम तोड़ती हुई कोई बेशकीमती सी चीज है। पहले लगता था मधुमक्खी है तो मधु भी होगा, अब जाना
मधु सदा से है, मगर मधुमक्खी कहलाने की ताकत नहीं बची है इंसान में। अब मीठी बातें उतनी अच्छी नहीं लगती, झूठी बातों पर हंसी नहीं आती। अब सबसे मिलने का मन नहीं करता, अब मेलों में जाकर चीजों को देखने का दिल नहीं करता। अब देखती हूँ ऐसे कि बस ये आखिरी बार देखना है। अब घुटने टेकने का मन नहीं करता, समंदर से दूर खड़े होकर उछलती लहरों में डूबते उस तैराक को देखकर जाल फैलाने की चाह जितना कुछ बचा है खूब भीतर, बांध कर उसको मैं छोड़ आना चाहती हूँ उस पुराने कुएं में। मैं नहीं चाहती वो मछलियों सा रहे वहां, मैं चाहती हूँ हरिताल सा वह बोले, झिंगुर सा आवाज दे, वो टकाचोर सा कहे कुछ, और कभी कभी ही सही, जुगनुओं जितना ही सही वह चमके। जब मैं लालटेन की रोशनी में जगत से लगकर लिख रही होती हूँ कोई नज्म, वह पनभरनी सा आकर ले जाए एक मटकी ठंडा पानी। वह आग के आकाश में पंख पसार कर दिखला रहा है जले पंखों की बिना परवाह किए। आज दिन भर शब्द चूकता रहा एक चूजा, वह कल भी कोई घर नहीं बनाएगा। पीठ पर घिस घिस कर फटी कमीज के भीतर जो ठंड रिस रिस कर पहुंची, वह सच्चे कवि का कुबर बन गया है। बिना सिहरे टेके घुटनों को अपने ऊंचे कद के साथ वह ठंड रेगिस्तान पार कर रहा है। भूख से बिना बिलखे, अब बिना गिल के भी उफनता दरिया तैर जाएगा कोई डूब कर लिखने वाला। इस बीच बत्तखों के झुंड सा आ जाती हैं एक के बाद एक याद तुम्हारी। पानी पीकर माटी धीरे धीरे रंभाती है, थके किसान सा लेटी मैं माटी पर, बोए हुए खेत सा दिखता है नभों पर। सांझ के जाते जाते उसमें उग आता है तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें जैसे दाना चुगती दो चिड़िया जो मुखातिब हैं एक दूसरे की तरफ, ना कोट बनाए है, मानो वे बशीर के उपन्यास के दो पात्र हों जो जेल की दीवार के आर पार रहते हैं। एक मजबूत पिंजरा बनाने में झोंक दिया है मैंने स्वयं को। उस पिंजरे में बालकोनी, खिड़की, बिस्तर सब है। फिर उस पिंजरे को बहुमंजिला किया मैंने दूसरों के पिंजरे भी खरीदे, ऐसी जमीन भी जहां पिंजरे खड़े किए जा सकते थे। वक्त आया, मुझे जाना है। यमलोक के द्वार पर का द्वारपाल चिल्लाया, देखो पिंजरे वाला बेघर आदमी आ गया। चित्रगुप्त ने कहा, इसका घर जल गया है, इसके पिंजरे दुरुस्त हैं। पिंजरों को बांटने के लिए बहुत से घर आपस में भिड़ रहे हैं। यह डिब्बा है, डिब्बे में हम जो जी आए डाल सकते हैं। डिब्बा फिर कितना भी चाहे उसे निकाल नहीं सकता। ऐसे ही डिब्बे बना दिए गए हैं बहुत से लोग, ताकतवर उनमें काला, पीला, लाल, केसरिया, हरा, नीला, न जाने क्या क्या डाल रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं नींद में हाथें क्या करती हैं, पता नहीं चलता वे सीधी हैं, मुड़ी हैं, सुंदर लग रही हैं या असुंदर। हम कई प्रकार की नींदों के गिरफ्त में हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या कह और क्या कर रहे हैं। कई अंग खतरनाक तरीके से काम कर रहे हैं, दुनिया को ये बेतरतीब और भयावह बना रहे हैं। जागो नींद से, जिराफ से कोआला बनने में देर नहीं लगती। हम चौराहे पर खड़े हैं, हर बार चौराहे से जन्म लेती है नई सड़क। सड़कें सांप सी दिखती हैं चौराहों को, नेवला सीटी बजाता है, सड़क न चाहकर भी रुकती है, फिर चौराहे के पेट से होकर गुजरती है, चल पड़ती है अगले चौराहे की तरफ। हर बार चौराहा खा जाता है सड़क को, और हर बार चौराहे से ही जन्म लेती है कोई नई सड़क। दूसरी कविता छोटी है, सुना देती हूँ। महामारी में स्कूल बंद था और दोपहर का भोजन भी। महामारी, बंद स्कूल, मैं और बिल्ली। मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगी, मेरे घर में मछली और भात नहीं पकती है रोज, दूध भी रोज नहीं आता। हर दिन छक कर खा पाना मुश्किल है, तुम्हें क्या खिलाऊंगी। अब्बा 1 साल हुए लौटे नहीं, अम्मी को इस महीने भी काम नहीं मिला, स्कूल बंद है और दोपहर का भोजन भी।
इस गेट पर कब तक मेरे साथ बैठी रहोगी प्यारी बिल्ली? तुम किसी की दीवार फांद कहीं भी म्याऊं म्याऊं कर मांग सकती हो भर पेट भोजन। तुम बिल से चूहे पकड़ कर खा सकती हो बगल की खेत किसी के घर आंगन में जाकर। मैं मूली की इस खेत से एक मूली उखाड़ कर खा लूं तो पहरेदार चोर कहेगा। मैं म्याऊं म्याऊं करूं तो लोग पागल कहेंगे, पत्थर मारेंगे और कोई कुछ भी खाने को नहीं देगा। तुम मेरे साथ बैठकर स्कूल और दोपहर के भोजन की प्रतीक्षा छोड़ दो। तुम्हारे पास मुझसे अधिक विकल्प हैं। शुक्रिया। Thank you, Anamika Anu. Now, next, I call upon Lenin Kumancha from Manipuri. Lenin Kumancha, Manipuri. Thank you, Chairman of this session and my teacher, Professor Rajendra Jamba. Regarding with poetry reading session, I would like to present some two poetry in Manipuri and some one poetry in English. Firstly, I would like to present one poetry in Manipuri. This poetry is reflects the present situation of Manipur, and I dedicate to mothers of my state, Manipur. Title of poem is Imagi Damak Iba Saireng. Poetry for my mother. Lamjauk sorokta ahing mingshel khang libi palem sing. Lamjauk sorokta ahing mingshel khang libi palem sing. Natte mafam ase makhoigi yarek pham. Lay makhoigi su sanak ponung amatta watana masa masu sing. Lay makhoigi sanak ponung amata wate masa masu sing. Ahing mingshel khang libi palem sing. Ahing mingshel khang libi palem sing. Makhoigi kokshet mathakta thongal i ima laybak poirei maitrabak. Ahing mingshel khang libi palem singi kokshet mathakta thongal i ima laybak poirei maitrabak. Palem singi khwangchit masigi kallaba langla. Palem singi khwangchit masigi kallaba langla. Setna pulladuna lak libani. Ekhoigi ngamkhay. Khut ki mairana ngakthok libani. Tinmu phattabasing laimu phattabasing. Palem singi khwangchit masigi kallaba langla. Setna pulladuna lak libani. Ekhoigi ngamkhay. Khut ki mairana ngakthok libani. Tinmu phattabasing laimu phattabasing. Palem singi mafamda laite akiba phaude ninghannabasu. Laite akiba phaude ninghannabasu. Humangi irik singbu thaunagi iput onthokpa ngambi palem ngaktani. Humangi irik singbu thaunagi iput onthokpa ngambi palem ngaktani. Sayep singi mikha ponngai sieng khuzok aman niru baidamak I khuzok ani pirakpada pharaba samlang sari talaba puk khwangchet chetna laksin lanthengna rakhribi singni. Sayep singi mikha ponngai sieng khuzok aman niru baidamak I khuzok ani pirakpada pharaba samlang sari talaba puk khwangchet chetna laksin lanthengna rakhribi singni.
Kariem naganu, Kariem naganu, Lamjauk sorokta, ahing mingshel khang libi palem singbu. Kariem naganu, Lamjauk sorokta, ahing mingshel khang libi palem singbu. Haigal liba nangak sing ado, narai lukna kurumu, makoy maphamda. Haigal liba nangak sing ado, narai lukna kurumu, makoy singi maphamda. Thanks. I want to conclude my first poetry in Manipuri. Then I want to present one more poetry in Manipuri. It's very short, and this title of poem is like in English, The Reef. I want to present this is again in the English. Firstly, I want to present in Manipuri. Like lepsakibani khongpham sena punsi sida hangba amata lehalloi thibasu phangkhide matamdudadi hangba amata laikrak satpadi laira duna mai amatang lakpa matamda mensin zakhibani kayada napal tawna lakraba punsi sina punsini khalamba adungagi punsi sing punsi amata oiramde ngamnamak manglan oirami ngasi mikap thoktuna chatlage thorang lakpa matam asidadi khongdafam amata leramdre chaura laikrak singtana laikrak ama menanaba honabada isa pumba choktharakle yauge khaliba panthungdi tamna leiri laikrakti lauba asum hengalakli. And I want to present last poetry, the laikrak in the English, The Reef in English version. Its family decides no empty space will make. It is family decides no empty space will make in this life. The den I did found, the den I did found not a single empty space. Its family decides no empty space will make in this life. The den I did found not a single empty space. Before creating a reef, I just fixed the starting point of a crack. Before creating a reef, just I fix the starting point of a crack. What a life! What a life with a such arrogance! What a life with a such arrogance! Lives of the den, lives of the den, printed as the best real life. They were not but a dream. Lives of the den printed as the best real life. They were not but the dream. Awakening to the day's first light, planning step journey in the sights. Awakening to the day's first light, planning steps journey in the sights. No ground to treat. Vast space sprawl. Vast space sprawls, preoccupied by the emptiness, life's call. Awakening to the day's first lights, planning step, journey in the sights, no ground to treat, vast space sprawl, preoccupied by the emptiness, life's call. Trying to fit a single reef, resulting fatigue in my life. Trying to fit a single reef, resulting fatigue in my life. The destination that I dream of. Oh, it is too far away from me. Trying to fit a single reef, resulting defeated in my life. The destinations that I dream of. Oh, it's too far away from me. The space is too widening. The space is also widening day by day
day by day. Thanks once again. Thank you. Thank you, Lenin Kumancha, for presenting Manipuri poems. The next one, I would like to request Sri Sakati Tamil. Sri Sakati Tamil. Good afternoon, everyone. First of all, my sincere thanks to Sagit Academy for giving me the opportunity to come here and share my experience with you people. And also, thanks our chairperson today who is organizing the program today, and also my who all are participating today. I thanks to all my colleagues. I have came from the part of the south, almost in Tamil Nadu. So I'll finish my very shortly. It is the best poetry is what we want. The best poetry will be found to have a power of forming, sustaining and delighting us to nothing else can. A clear, deeper sense of the best in poetry. And of the strength and joy to be drawn from it, the most precious benefit which we can gather from a poetical collection such as the present, and yet in a very nature and conduct of such a collection, there is a inevitability, something which tends to obscure in as the consequences of what our benefit should be, and distinct us from the proceed of it. And also, just explain one poetry that I wrote at the COVID time. That time, the critical situation. So I just explain one poetry about that time. It may be, if you are imagining, it may be fit your life also. My thanks to all, including those four. Just imagine who is those four. That's your choice. I thank thee all with sunset yet to be. I keep walking. At my back, my shadow thinned as a patient affected with syphilis. Thank God none of you had seen on that day untimely, however, stinging pain on the exterior right side of the back. I endured, survived. You would not have known I took leave with a heavy heart. When we shook hands, we should have nice cordiality could be here on the day when my mother went away. There was a deep struggle of a pregnant woman's safe delivery. I survived. I know you prayed for me. With all the four wheels revolving, it was a new kind of car. The span within my reach being unimaginable to you. When I came back to life, solidified in one piece of all my core bone structure were but metals. You consoled me, who lay there reassembling a robot. I enjoyed the first ever music of the river. I remained the lying alone inside in beauty, providing bare land. In the present time music, that river floated on love. I am a cork, yet heavier than the stone. In the meaning on the river bank, it was who found me. When the blood vessel were seeked, when bring the same from deep down stealthy, when sugar turned excess in the sea of sleep, when the cholesterol swelled in the duct, when there was a kith and skin to give me a piece of land, who were always there. Little by little, when death captured my whole, if you leave my alone, not writing elegies and essays, paying tribute and homages, not string in the rotten remainings of
that what we are saying, that funerals, I would be all the more thankful of you. If I'm saying in my language, நான் மரணம் வியாபிக்கும் நாளில் கண்ணிமை கலியாத கற்கள் போல கட்டுரை எழுதி மயான அலகுகளில் தொலைவாமல் விட்டீர்களெனில் உங்களுக்கு என் நன்றியை உரித்தாக்குவேன். That is the time, one of the important poem. So I plan to share today. I am waiting for one good stage to share that pain. So I hope it may be conveyed to you. One language issues there, otherwise it will be easy to convey to you. So anyway, I thanks to everyone. Sagit Academy, 2020, I won Yuva Puraskar. So again, I share the stage in Sagit Academy. So thanks to everyone who is make this chance possibilities. And I say thanks to everyone. Love you all. Thank you. Thank you, Sir Kati, for your nice poem. The next one is Sri K. Srikant from Telugu. Now, K. Srikant, Telugu. I come from Hyderabad. My mother tongue is Telugu. I'll be reading a text translated into English. These are the few things that I have always wanted to ask my mother. The title of this text is a personal note to my mother. Ma, I have always wanted to ask you a few of these things for quite some time, because I don't want us to die as strangers. I don't want us to die without not knowing each other that well. And I also want to assure this world and these people that there is nothing wrong in knowing these things, which are human, of being humane. Ma, have you been loved? If so, how was it, Ma, of being loved? Was it like being a plant watered, a bud blossoming in the rain, Ma? Ma, did you love someone? If so, how is it being in love, Ma? Was it being like watching the world for the very first time? Was it like finding the first sound and the first word that a child utters, Ma? Ma, was it like magic of having being loved or being in love, Ma? Ma, do you have any secrets? Secrets of a sacred heart? The secrets of a bleeding heart like I do, Ma? Ma, how is it being wounded? How is it being hurt? How is it being used by someone and discarded like a product? Ma, tell me, how is it being treated like a product, Ma? Have you eaten well, Ma? At least for a few days in your life. Are you nourished well, Ma? Inside out? How does it feel, Ma, being malnourished? How does it feel, Ma, not to have enough money even to buy sanitary napkins? How does it feel to stretch your hand in guilt to ask for the money that you have earned from your job, even for your basic necessities, Ma? Ma, how is your sexual life? Have you passionately made love to someone, Ma? Has someone made love to you so tenderly that you had to cry, Ma? Or how does it feel to be used as a sex toy or a sleeping pill sometimes, Ma? Or most of the times, Ma? How does it feel when you're forced to fake an orgasm, Ma? Ma, did you lie about yourself? How does it feel when you're forced to lie so as to avoid an interrogation of barrage of questions when you are late to home, Ma? Ma, how does it feel to be treated as a criminal? How does it feel to be treated with suspicion, Ma? Ma, how did you feel when someone hit you? How does it feel when someone insulted you and body shamed you? Ma,
How does it feel to hold back tears and sob later into the night, Ma? Ma, how does it feel to bear a child? How does it feel to go through those 9 months? How does it feel to bear a life in you day in and day out, Ma? Were you happy, Ma? What is it to be a mother, Ma? How does it feel being a mother, Ma? Ma, how does it feel being betrayed, Ma? How does it feel to live in a debt-ridden life? How does it feel to live knowing that something somewhere went wrong and things wouldn't be the same again, Ma? How does it feel to live in humiliation? Humiliation of love, love as humiliation, Ma. How does it feel to go through all those years of middle age and approach menopause, Ma? How does it feel for you? How does it feel for the body? How does it feel for your heart, Ma? How does it feel to see the body wither away like a tree, Ma? Ma, how does it feel to step into the old age? How does it feel to sit alone on a moonlit winter night and think of all those years gone by, Ma? How does it feel when everything seems to fail? The body, the eyesight, and even that which we call as soul, Ma. Ma, how does it feel to live with sleeping pills day in and day out, Ma? Ma, I have always wanted to ask you a few of these things for quite some time because I don't want us to die as strangers. For I don't want us to die just as the world wants us to be. I don't want us to die with empty hands and hearts, Ma. And I don't want to die in oblivion, Ma. So, Ma, how does it feel to live like a shadow? How does it feel to live like a fading flower and a waning moon, Ma? How does the lovelessness feel, Ma? A lovelessness that has become a shadow, fading flower, and a waning moon, Ma. Ma, but most of all, how does it feel to die day by day, minute by minute, and second by second with a bleeding wound that is as large as life and as large as your heart, Ma? Ma, my little Ma, how does it feel to die? How does it feel to live, Ma? Ma, how does it feel to die, Ma? Thank you. Very, very nice poem from K. Srikant from Telugu. Friends, we all know that poetry is the first form of literature. In the world, people began in the dim and the misty world of the ancient times to express themselves in song or some kind of rhythmic pattern of language. When we become stirred with emotion and feelings, we usually express ourselves in poetic language. And we have gathered here today more again to communicate with one another in poetry. We are read poems written in various languages of languages of multilingual and multicultural country, that is India is our glory's motherland. As a matter of fact, the rhythmic interaction of poetic rhythm and resonance will certainly enable us to identify
and to define the basic Indianness, because our poems are going to deal with various aspects of Indian experiences. Really speaking, the organization of such Northeast and Southern Poets Meet is an attempt to build a bridge among the different social or ethnic communities, the group is speaking different languages in different states of our country. Age. Literature is a reflection or mirror of the different ways of life lived by these ethno-racial and linguistic groups. The meeting of the poets participating in this program will help in a creative interaction leading to the integration of various components of a diversified and a pluralistic country. In this connection, ladies and gentlemen, kindly allow me to say that for some years we have been meeting again and again in various parts of India, reading poems in various languages of India to prove that we are all Indians. And that our poems belong to the rich treasure house of the Indians. This rich treasure house of Indians literature, and that we have gathered again here Delhi to reinvent ourselves as voice of various languages of Indian, trying to show once again the important fact of our oneness and our integration, which is being written in many ways in the travel-ridden journey of new and vibrant India. Now, ladies and gentlemen, we are luckily together here, enjoy the meeting, reading of poems, Northeast and the southern parts of India. I hope the poets will be interact together with one another and also think to in the terms of crafting a beautiful and a multicolor fabric. Thank you all. Thank you, Shri Rajan Jambaji, for chairing this session of Northeast and Southern Poets Meet. I would also like to thank all the participants, Tulika Yen, Shakti, Shri K. Shrikant, Newton Basumatari, Anamika Anu, Subhu Huliat, and Delin Kumanja from Manipur. We'd like to have a photo op at this moment, so kindly come to the fore, please.
साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित साहित्य उत्सव में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र का शीर्षक है नारी चेतना। This session explores the mindscapes of the female writer, and we see glimpses of a woman's mind through her work, and we will see readings from their stories. To chair this session, may I invite the noted Assamese writer, Srimati Orupa Patangya Kolita, to join us on the stage, please. Orupaji has 5 novels, 12 collections of short fiction, 2 novels for children, translations into Assamese. Toni Morrison's The Bluest Eye is the most recent. Several of her books have been translated into English, Hindi, Bengali, Marathi, and Bodo. She is a recipient of the Bharatiya Bhasha Parishad Literary Award, Katha Award, and Sahitya Akademi Award. May I also request on the dais Srimati Usha Upadhyay, who is an eminent poet and writer in Gujarati. She has 40 published books in different genres, including poems, stories, plays, criticism, essays, research compilations, and children's literature. Her acclaimed poetry collection, Arundhatino Taro, has been translated into other Indian languages. She has received prestigious awards from different literary organizations. Usha ji is also the founder of the renowned Indian Women's Writers Festival, Juhi Mela. May I also request Dr. Nidhi Agarwal to join us on the dais, please? Nidhi Agarwal is a noted Hindi writer and a doctor by profession. She has to her credit 4 books besides many works in literary magazines and journals. She is the recipient of the Pandit Badri Prasad Shinglu Puraskar and Sumutra Devi Avasthi Yuva Puraskar, among others. May I now hand over the mic to Srimati Orupa Kolita. Women writers. So I'm fortunate enough to have the chance of sharing the women writers session. So women, they live in the same social structure with men. They live amidst the same socio-economic background, but do they have a different reality from men? Of course, yes. Women, they have a different reality from men. Female reality is a different one. Women, they menstruate, they give birth to children, they are raped, they attained puberty. So their physical world is different. And the main trend, literary trends, there is a tendency to hide the female reality. They do not want to even recognize the female reality. So in 19th century, when Emily Bronte, Jane Austen, they had taken up their pen, the whole Victorian world, they rose against them and they marked them as some neurotic creatures. And they are of the opinion that women who bled in every month, what do they have in their brains? Even Dr. Johnson, a famous critic of Victorian age, he termed women writers as some, some beasts dancing on hind legs. When does a creature dance on hind legs? When it imitates. That means that women writers, they know only how to imitate. Even they describe a famous or immortal author, Jane Austen, as her literary craft. They compare it with knitting. So that was the opinion of the women writers. And 19th century women writers, they were, all of them, they suffered a lot
and they had to swim across the tide. But they continued their writing, and women, they continue their writing also. And Virginia Woolf, she is of the opinion that if women cannot speak about themselves, no one can understand about the female reality. And yes, that's true. So Alice Walker, she tells us about clitoridectomy. Toni Morrison, she tells us about the plight of the Black women in this way. The women writers, they are successful in creating a literary trend completely different from the mainstream literature. So I can say you proudly that in my college days, I used to teach women writing as a paper. Yes, women writing, now it is considered as a paper, and it gains respect from the mainstream literature also. And all the awards are now grabbed by women. And now we cannot rule out women writers as bitches dancing on hind legs. So today we are going to hear two women writers, and we want to see slices of female reality. So let's enjoy, let's enter into their world, and let's try to understand the female reality which had been covered by the mainstream literature. So let's enjoy their writings and feel the power of women writing. Okay, thank you. So first of all, a powerful voice is here. A powerful voice is here, and she is going to read a story in Hindi. Okay. आदरणीय मंच एवं यहाँ उपस्थित सारे साहित्य प्रेमी साहित्यकार एवं श्रोतागण, यहाँ पर जो समय दिया गया है 10 मिनट का, उसमें मैं अपनी एक छोटी कहानी का पाठ करूंगी। जो दूसरी कहानी है वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसमें 15 से 17 मिनट कम से कम लग जाते। तो जो एक छोटी कहानी है जो गुजरात में बहुत ही फेमस हुई है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ये कहानी मध्यम वर्गीय महिला की है, और क्या उसने महसूसा, इसकी बात, इसकी स्थिति क्या है, क्या महसूसा, इसकी बात इसमें है। तो कहानी में प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है लो मैं चली। घर में सब भोजन करके टीवी सीरियल देखने बैठे, और जैसे ही मैंने बर्तन मांजने के लिए आंगन की चौकड़ी में पैर रखा, वैसे ही धधकते अंगारे पर पैर रख दिया हो ऐसी जलन लगी मेरे तलवे में। देखा तो बिच्छू। तुरंत उनको आवाज दे दी गई, देखिए तो बिच्छू है क्या। भागते हुए आकर उन्होंने देखा तो नीला कांच जैसा बिच्छू जा रहा था। तुरंत मारने के लिए उन्होंने पास में पड़ा हुआ डंडा उठाया। हाय दैया, मत मारिए उसे, उस पर पैर आ जाएगा तो काटेगा ही बेचारा, और डंक तो मार ही दिया है उसने, फिर उसे मारने से भी क्या भला। मैं बोल उठी थी, लेकिन डंडे की धड़ाधड़ मार के बीच मेरी आवाज न जाने कहां कुचल गई। उन्होंने हाथ थामकर मुझे बरामदे की खटिया पर बिठाया। इतनी देर में तो घर के तथा पास पड़ोस के सब लोग इकट्ठा होने लगे थे। कोहराम सा मच गया था। तरह तरह के उपाय सब लोग बता रहे थे। उस बीच उन्होंने मेरे पैर की पिंडी पर कसकर डोरी बांध दी। अस्पताल ले जाने की बात हो ही रही थी कि बुआ जी आ गई। आते ही तुरंत उन्होंने हुक्म छोड़ा, कटोरी में थोड़ा सा नमक भिगो कर ले आ तो भैया। नमक आते ही
मेरा पैर गोदी में लेकर बुआ जी बिच्छू के डंक पर जोरों से नमक घिसने लगी। इस सभी हो हल्ले के बीच मेरा मन तो कुछ और तरह से ही चलने लगा था। शरीर और मन जैसे बिल्कुल अलग अलग हो गए थे। जैसे कोई अजीब सी लहर चली थी मेरे मन में। हाश, कल से घड़ी की सुई के साथ दौड़ना नहीं पड़ेगा। हर रोज की चिक चिक की चिंता भी नहीं रहेगी। अब कोई फिक्र नहीं रहेगी दूध और सब्जी के हिसाब की। तेजी से आती हुई मारुति में बैठी किसी कन्या को देखकर अब दबी हुई सांस नहीं निकालनी पड़ेगी। दार्जिलिंग के प्रवास में जाने की जिद कर कर रोता हुआ बिलखता हुआ बेटा बकुल उसे मनाते मनाते दूसरी ओर देखकर आंखें नहीं पोंछनी पड़ेगी। आह, कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। लगता है जैसे कोई हौले हौले मेरे सिर पर हाथ पसार रहा है। मन में ठूंस कर भरी हुई सारी चिंताएं पोंछ डाली है उस हाथ ने। कैसी हवा सी हल्की हो गई हूं मैं, मानो आंखों में कोई धीरे धीरे मीठी नींद भर रहा है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है लोग शराब क्यों पीते होंगे। दिमाग के दौड़ते घोड़े की लगाम शायद ऐसे ही शराब की प्याली से ढीली हो जाती होगी और बेचारा दुनिया से जला भुना आदमी चैन पाता होगा न। जी, क्या पूछा आपने? पैर में झुनझुनी होती है ऐसा लग रहा है? पैर में जलन हो रही है और मेरे मन को तो मस्खरी सूझती है। आहा, मौत के फरिश्ते ने हाथ क्या लगाया है। मैं जैसे मोर पंख सी हो गई हूं। हंसते हुए होठों पर जवाब आ जाता है, जी होती है न, लेकिन दाहिने नहीं बाएं पैर में। सुनकर सबको लगा कि जरूर बेहोशी ही छाती जा रही है, वरना बिच्छू ने काटा है दाहिने पैर में और वो बोल रही है कि दाएं बाएं पैर में झुंझुनाहट हो रही है। हाय दैया, कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके चेहरे पर भी घनी चिंता छा जाती है। सच बताना, अब कैसा है बोलना। मैं उनकी आंखों में झांकती हूँ। आंखों में थोड़ी सी मुस्कान के साथ मेरी जुबान पर जवाब आ जाता है, क्यों? अब क्यों मेरी इतनी चिंता कर रहे हो? जाने दो ना मुझे। मैं कहाँ तुम्हारी देखभाल करती हूँ। रोज तुम्हें कोई न कोई शिकायत होती थी ना। आज क्यों मेरे साथ ठीक से बोली नहीं? जा, नहीं खाऊंगा प्याज की सब्जी। खाना ही नहीं है ना आज। बकुल के लिए दूध बनाया तो साथ में मेरे लिए क्यों नहीं बनाया? ओ, अब ऐसे किसी सवाल के जवाब नहीं देने पड़ेंगे। और यह घी और शक्कर किस लिए है लीला बहन? पेट में जलन न हो इसलिए? अरे मेरी बहना, अब तो अंदर और बाहर अग्नि ही अग्नि है ना, उससे अब क्या बचना। मैं तो तैयार ही खड़ी हूं अब किसी का दामन थाम कर आकाश में खो जाने के लिए। फिर तुम क्यों ऐसी रुआंसी हो रही हो मेरी बहना? ये देखो, तुम्हारी आंखों में झिलमिलाते इन आंसुओं को देखकर मुझे मेरी माँ याद आ गई। मिलेंगे अब तो अगले जन्म में मेरी माँ। अगले जन्म में भी तेरी ही कोख से जन्म लूंगी, गुलाब के फूल जैसी। देखना, इस जन्म में तो अब माँ मेरे बकुल को ही संभालना। बकुल बोलते ही फिर से कलेजे में चुभन होने लगी। लेकिन नहीं, जो अपने बस में नहीं है उसके लिए क्या रोना धोना। आज नहीं तो कल
जाना तो था ही, यहाँ कौन अमर होकर आया है। बंद होती हुई आंखों के साथ कानों में बुआ जी के कुछ शब्द पड़ते हैं। सोने दो अब बेचारी को आराम से, अब चिंता की कोई बात नहीं है। मानो सास ससुर की सेवा काम आ गई है क्या। सुबह होते होते तो देखना हिरनी जैसी दौड़ती हुई उठ खड़ी होगी, जैसे कि कुछ भी हुआ न हो। कल कैसा लगेगा, मैं सोचूं इससे पहले तो आंखें और गहराने लगी। फूल जैसा हल्का होकर मेरा शरीर जैसे ऊपर उठ रहा था। मैं हवा का झोंका बनकर दूर दूर जा रही थी, या फिर बुआ जी के साथ सब लोग मेरे से दूर जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे सब कुछ अदृश्य हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। चारों ओर चंदन के लेप जैसा अंधकार छाने लगता है। अच्छा, अलविदा, अब मैं तो चली। लेकिन यह इतना दरवाजा कौन खटखटा रहा है, इतनी जोर से आवाज आ रही है। अरे आती हूँ, हाँ जरा रुकिए, गैस पर दूध उबल रहा है, वह उफन जाएगा, जरा उतार लूं उसे। अरे हाँ, 2-4 बर्तन बाकी है साफ करने के, वो भी कर लूं। फिर कल से तो मुझे कहाँ कुछ भी करना है, बेचारा उनको ही तो सारा काम करना होगा। हाँ हाँ भाई, आती हूँ भैया, कुछ भी बाकी नहीं है अब, बस अब छुट्टी। कोई चिंता कहाँ करनी है अब। शादी के पहले दिन भी ऐसी हल्की फुल्की तो मैं नहीं थी। अबे ओ भैया, इतना जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, तुम्हारे पीछे पीछे ही तो आ रही हूँ फिर भी। लेकिन ये कौन बुला दे रहा है, ये कौन आवाज दे रहा है। बहू बिटिया, जाग रही हो क्या, दूध वाला आया है। क्या सुबह हो गई। आंखें मलती हुई मैं चौंक कर उठ बैठती हूँ। डोरी बंधा हुआ दाहिना पैर जमीन पर रखकर जल्दी से सिर पर पल्लू खींचकर रसोई घर से दूध की पतीली लेकर मैं तेज कदम से किवाड़ की ओर जाती हूँ और फिर से दरवाजा खोलती हूँ। धन्यवाद। You see, mainstream critics are of the opinion that women cannot create immortal works because their experience is very narrow. Yes, women can't write stories about fishing in the deep sea like Hemingway, can't write about books like Jack London about gold mining. But women can create immortal literature within their household area. So Asapurna Devi, she proved it. And she also writes a story about piyaz ka sabji, boiling milk, nimok ka katari. Yeah, the whole episode centers around the household life. But with the description of with this domesticity, she creates a beautiful story. So this is the power of women writing, and she proves it. Okay. Now, I want to read another story by Miss Nidhi Agrawal. Yes, Nidhi, please come. So I hope you are going to enjoy her story. वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। थैंक यू मैम। उषा मैम ने बहुत ही एक मार्मिक कहानी हम लोगों के सामने पढ़ी और बहुत ही सुंदर पाठ किया। मैं जो कहानी आपके पास लेकर आई हूँ, जो सबसे छोटी कहानी मेरे पास है, वह मैं लेकर आई हूँ
और यहाँ पर स्त्री तो आती ही है, और जो भारतीय दर्शन है उसमें प्रकृति को भी स्त्री माना गया है, तो उस रूप में भी स्त्री यहाँ पर मौजूद है। और मुझे हमेशा लगता है कि हमारा स्त्री विमर्श तब तक मजबूत हो ही नहीं सकता जब तक कि जो चेतना में बदलाव है वह पुरुष में ना हो। तो कुछ ऐसे पुरुष को भी मैंने यहाँ लाने की कोशिश की है। छोटी सी कहानी है लेकिन आपका पूरा ध्यान चाहेगी, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कहानी का शीर्षक है पेड़ों पर उगी प्रतीक्षित आंखें। वह हाथ आंगन की सरहद बेधड़क पार कर खिड़की से होता हुआ आज रात पुनः कमरे के भीतर दाखिल हो गया। मेरे गले पर उसका दबाव बढ़ता जाता था। मैं चिल्लाना चाहता था, कहना चाहता था, मुझे माफ कर दो। खौफजदा गले से घू घू के सिवा कुछ ना निकलता था। मेरी फटी आंखों पर अपनी आंखें जमाए वह कह रहा था, मेरी अमानत वापस करो। घर के बड़े अहाते में लगे सभी पेड़ मैंने कटवा दिए थे, लेकिन यह वट वृक्ष माँ की जिद के कारण बचा रह गया। पेड़ों का कटना दुर्भाग्य लाएगा, माँ कहती। वह नहीं जानती दुर्भाग्य के पास हर ताले की चाबी है। वह किसी भी दरार से रिस सकता है, साबुत दीवार से प्रवेश कर सकता है। जब दुर्भाग्य आता है तो पेड़ स्वयं दैत्य बन जाते हैं। जीवनदायिनी नदी विपदा की आग उगलने लगती है। आहते की ओर खिलती खुलती इस खिड़की को मैं यथासंभव बंद रखता। पेड़ के करीब से गुजरते हुए सांस रोक उस पर लटके सायों को देखता रहता। साए हर दिन दुगने हो जाते हैं। वह अचल रहते और मेरे पास पहुंचते ही धप्पा करते मेरी ओर दौड़ पड़ते। मैं पसीने पसीने हो जाता, हड़बड़ा कर दौड़ता, कितनी दफा गिर जाता, हाथ पैर छिल जाते और उनका क्रूर अट्टहास मेरी पीठ से चिपक जाता। मेरी अवस्था देख माँ विनी से कहती है, हो ना हो स्वप्निल पर कोई प्रेत बाधा है बहू। सच यह है कि इन दिनों माँ मेरे लिए स्वयं प्रेत बन चुकी है। न गांव जाने को राजी कि उसकी अनुपस्थिति में यह पेड़ कटवाया जा सके, न गांव का घर बेचने को राजी कि उसे बेच कहीं और घर लिया जा सके जहां आसपास कोई पेड़ ना हो। वह तिरस्कृत भाव से मुझे देखती है और कहती है, बिन पेड़ों के दम घुट जाएगा। वही तो मैं समझाती हूँ इन्हें, विनी समर्थन करती है। माँ ना भी समझे पर विनी तो जानती है कि पेड़ों पर सड़े हुए शव हैं। उन्हें कैसे बताऊं कि उन पर चील कौवे नाचते हैं, शोर मचाते हैं। यह विभत्स दृश्य मुझे पागल किए है। रात होते ही पेड़ों के पत्तों पर चमकदार आंखें उगाती हैं। इनकी संवेद दृष्टि मेरी ओर देख आग उगलती है। आंखों से आदेश पारित होते हैं और पेड़ के बढ़ते हाथ मेरी गर्दन तक पहुंच जाते हैं। वे मुझे खींचकर अपनी दुनिया में ले जाना चाहते हैं। मेहमान चील को मेरा गोश्त देना चाहते हैं। पेड़ के शीर्ष पर बैठी मेहमान चील लोलुप निगाहों से मुझे देख मुस्कुरा रही है। विन्नी कमरे में दाखिल होती है और साए सांस रोक दीवार में समा जाते हैं। मैं चिल्लाता हूँ, खिड़की बंद कर दो। कितनी तो उमस है, वह साड़ी के पल्ले से अपना माथा पोंछते कहती है। और ये कमरे में कैसी महक है, विन्नी सूंघते हुए अप्रसन्नता जताती है। जानती हो, मेरे फेफड़ों में भरा पानी सड़ गया है, मछलियां मर रही हैं, मैं उन्हें कैसे बचाऊं। मेरी आंखें अनायास भीग उठी। रूम फ्रेशनर स्प्रे करते उसके हाथ रुक जाते हैं। वह घबराकर मेरे पास आ गई। तुम ठीक तो हो? तुम्हारी सांस क्यों ऐसे चल रही है? वह चिंतित स्वर में पूछती है। मुझसे नहीं, अपने आप से ही। इन दिनों मुझसे कोई उत्तर की आस कब रखता है। वे सब ऑक्सीजन चुरा कर ले गए। मैं खिड़की के बाहर इशारा करते उसे सूचित करता हूँ। विनी डॉक्टर को फोन मिला रही है। कुछ ही देर में डॉक्टर का लंपट कंपाउंडर आएगा। मुझे नींद का इंजेक्शन देते उसकी नजरें विनी पर होंगी। विनी उससे गुजारिश करेगी, भैया ध्यान से, ज्यादा दर्द ना हो, और आंखें बंद कर मुंह फेर लेगी। नजर फेर लेना दर्द से बचने का सुलभ उपाय है। मुझे लगे इंजेक्शन का असर है। सब सो गए हैं। पेड़ों पर लटके साए भी ऊँघ रहे हैं। चीलों के लिए यह डोज ज्यादा है। वे बेहोश होकर पके फलों सी आंगन में टपक रही हैं। रुकी हुई बारिश की छत से टपकती बूंदों के साथ टप 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 टप। जमीन को स्पर्श करते ही छोटी सी बूंद फैलकर
एक बड़ा घेरा बना लेती है। आंगन अनगिनत लाल घेरों से भर गया है। जो अनेकों विधवाओं ने अपने माथे से बिंदी उतार आंगन में चिपका दी हो, वहीं से एक बिंदी उठाकर मैंने विनी के माथे पर चिपका दी। बारिश ने गियर बदला और बिंदी की लाल बत्ती को धता बताते बादलों ने सिग्नल तोड़ दिया। स्मृतियों की आंख में भय का तिनका रड़कने लगा। तिनके को बहाने बारिश बढ़ती जा रही है। बारिश के साथ मंत्रों का शोर भी। पवित्र गंध वातावरण में तैर रही है। जोश बढ़ता जाता है। भीगे तन संतृप्त मन से सब सोए हैं। बारिश की बूंदों के कोमल स्पर्श से अचानक किसी की वर्षों की तंत्रा टूट गई। पानी ने पानी का तन चीर दिया। हिंसक व्यक्ति अपनी जाति के प्रति भी असहिष्णुता से भर उठता है। एक चित्कार वादियों में गूंज गई और जल की प्रत्येक बूंद ने विनाश की संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बदला हवाओं में तैरने लगा। कोई भी गुनाह क्षम्य नहीं होता, दंड मिलता है, भले ही अगली पीढ़ी को। कुछ वसीयत प्रकृति गुपचुप लिखती रहती है। जब नींद टूटी, हर ओर विनाश था। अपने सीने पर निर्मित हर अवैध निर्माण को जल बहा ले जा रहा था। क्रोध से फुफकारता जल विवेक त्याग द्रुत गति से आगे बढ़ रहा था। इंच इंच पर अपने अस्तित्व की मोहर लगाता हारता, मह्यम स्वहा इदम मम, यह मेरा है, मुझे वापस दो। हर ओर पुकार थी, पुकार का जवाब कहीं नहीं। मैं किसको पुकारूं? अकेला आया हूं। आकाश पाताल हर ओर बढ़ते जल तत्व के अस्तित्व को देख सोचता हूं, संभवतः बिना किसी से कुछ कहे सुने अकेले ही चला जाऊंगा। भीड़ के रेले में से किसी को किसी का धक्का लगा है। मैं अचकचा के आगे बढ़ जाता हूँ। पीछे से कोई बच्चा चिल्लाया, पापा, मम्मी। मैं एक क्षण ठिठकता हूँ और दूसरे क्षण आगे बढ़ जाता हूँ। सब दौड़ रहे हैं, अपनी क्षमता से कई गुना अधिक गति से। जो गिर गए उन्हें उठाने वाला कोई नहीं। नदी पर बने संकरे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। नीचे नदी की गर्जना से पैर कांप रहे हैं। पुल पार कर पलट कर देखता हूँ। पानी के दैत्य ने अपनी बड़ी जीभ निकाली और देखते ही देखते पुल और उस पर जीवन की आस में दौड़ते लोग अदृश्य हो गए। भय ने सबको पल भर के लिए जड़ किया और फिर शोर उठा, पीछे मत देखो, आगे बढ़ो। पैरों में सांप लिपटे हैं, उन्हें साथ लिए ही आगे बढ़ता हूँ। ठंड से बदन कांप रहा है या अनिष्ट शंका से। पहाड़ी पर पर्याप्त ऊंचाई पर चढ़ सब ठहर गए हैं। एक चाय की दुकान है। वह कहता है, जिसे जो लेना है ले लो, बचाकर क्या करूंगा, पता नहीं मैं स्वयं बचूंगा या नहीं। निमिष में दुकान लुट चुकी है। दुकानदार को भरोसा हो या ना हो, अनेक लोगों को कल का भरोसा है। उन्होंने सामान इसी विश्वास के साथ भर लिया है कि कुछ दिन उसके सहारे गुजारे जा सकेंगे। मैं बिस्किट का एक पैकेट हाथ में लिए पर्स निकालता हूँ। पर्स में माँ की दवाई की पर्ची है। दो औरतें एक अन्य औरत को ढाढ़स बंधा रही हैं। उसका पति और बच्चा पुल के साथ बह चुके हैं। पीछे लौटा नहीं जा सकता और आगे बढ़ने के लिए कुछ शेष नहीं है। बारिश का प्रकोप जारी है। मोबाइल पर दिल दहलाने वाले वीडियो आने लगे हैं। जिस विध्वंस की आंखें साक्षी रहीं, उससे अधिक भयावह खबरों के माध्यम से अब पहुंच रहा है। जिस पहाड़ की ओट में थके तन मन लेटे हैं, वह कभी भी कुपित हो पत्थर बरसा सकता है। बरसात सदा रुमानी नहीं होती। अंधकार की चादर बरसी है। सिर पर मौत लहरा रही हो तो भयभीत नींद छिटक कर दूर खड़ी तमाशा देखती है। कब बारिश हुई, कब रुकी, किसे याद, शरीर और स्मृति दोनों सुन। सुबह किसी ने सामने वाली पहाड़ी पर बाघ देखा है। मौत आनी है तो एक बार में क्यों नहीं आ जाती। दुकानदारों ने घोड़ों के लिए रखा गुड़ चना लोगों में बांट दिया। एक घोड़े वाले का घोड़ा पिछड़ गया है। वह उसे ढूंढने वापस जाना चाहता है। बाकी साथी उसे पकड़े हैं। बिछड़ा हुआ घोड़ा अपने मालिक को ढूंढ रहा होगा। उसके साथी उसे रोक नहीं पाएंगे। दिन के उजाले का रंग रात से अधिक स्याह है। पीछे मत देखो, नीचे मत देखो, मिलिट्री आने वाली है। अस्पष्ट आवाजें सांसों को साध रही हैं। एक निजी हेलीकॉप्टर उतरा है। वह अपने मालिकों को चिन्हित कर ले गया। पीछे पैसे की ताकत पर जिरह छोड़ गया। एक माँ अपने बच्चे के अकड़े तन को सीने से लगाए है। अपने बेटे के कंधे से टिकी अम्मा अचानक लुढ़क गई। बेटे ने मृत शरीर पहाड़ से नीचे धकेल दिया
और पत्थरों पर अपना सिर मारने लगा। माँ ने अपने बच्चे को और कसकर अपने आंचल में भींच लिया। कोहरे के बीच हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट के साथ दुपट्टे और कमीजें हवा में लहराने शुरू हो गए। एक इंद्रधनुष धरती पर उतर आया, जिसे देख कोई पलक नहीं उठती। हेलीकॉप्टर किसी चट्टान से टकरा क्षतिग्रस्त हो वापस लौट गया है। काल को अपने काम में दखलंदाजी पसंद नहीं। निराश लोग थक कर बैठ गए। कुछ लोग मिलकर भजन गा रहे हैं, कुछ मन ही मन अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। क्या मैं अकेला ईश्वर के अस्तित्व पर संशय कर रहा हूँ? एक और हेलीकॉप्टर आया है। बच्चों और स्त्रियों को बिठाया गया। वह पीछे छूटे परिजनों को शीघ्र मिलना होगा का आश्वासन मांगती दयनीय नजर से देख रही हैं। आर्मी वाले कह रहे हैं, सब बचेंगे, धैर्य रखें, हौसला बनाए रखें। बारिश फिर बढ़ गई है। फोन डिस्चार्ज हो चुके हैं और जीने की आस भी। दूसरी रात सब सो गए। मौत के भय से अधिक भयंकर तो ना होगी। चिंता व्यर्थ है। सुबह एक बच्ची रो रही है। वह पूरी रात अकेली चलती यहाँ पहुंची है। एक बुजुर्ग उसके सिर पर हाथ फेरता है। एक स्त्री आगे बढ़ उसे अपने पास खींच लेती है। हमारे साथ रहो, समझाती है। खबर मिली है कि हेलीकॉप्टर यहाँ से 4 किलोमीटर आगे उतरेगा। सब आगे बढ़ चले हैं। नीचे झाड़ियों और पेड़ों पर कहीं बैग फंसे हैं, कहीं बेसुध तन और कहीं मदद के लिए गुहार लगाते जिंदा लोग। असहाय लोग नजर फेर आगे बढ़े जा रहे हैं। एक हाथ ने पीछे से मेरी शर्ट पकड़ ली है। बचा लो, कोई तो बचा लो मेरे पति। वह गिड़गिड़ाती हुई नीचे की ओर इशारा कर रही है। यहाँ गिड़गिड़ाहट का ना कोई लिंग है, ना उम्र। कौन किसे बचाएगा? हर कोई स्वयं आश्रय तलाश रहा है। वह चिल्लाती है, अमर। बहुत नीचे किसी पेड़ की डाली पर कोई साया लटका है। नीचे घाटी की ओर विस्मय से देखता मैं बुत बना खड़ा हूँ। वह मेरे पैरों में लिपटी है। हिचकी मिश्रित अस्पष्ट स्वर में कुछ कहते हाथ का कंगन मेरी ओर बढ़ाती है। पसीना मेरे माथे से चू रहा है, जिसे बारिश धो नहीं पा रही। पेड़ की ओर से एक हाथ मदद की आस लिए ऊपर उठता है। हर ओर से निराश वह स्वयं नीचे उतरने का प्रयास करती है और रपट जाती है। कुछ अन्य लोगों के साथ हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता हूँ। ठीक इसी क्षण पेड़ पर लटका एक जीवन फिसल गया है। स्त्री का कांपता वतन मुझसे लिपटा बिलख रहा है। मैं स्वयं कांप रहा हूँ। हेलीकॉप्टर के शोर ने कई कई रुदन मंद कर दिए। मैं स्त्री का हाथ पकड़कर दौड़ रहा हूँ। स्वयं को रोकने की भरसक चेष्टा करती वह घिसट रही है। अन्य स्त्रियां उसे अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाना चाहती हैं, पर वह ना जाने पर अड़ी है। इस पहाड़ी पर आखिरी स्त्री को पीछे छोड़ हेलीकॉप्टर वापस लौट गया है। घाटी में पेड़ों की जगह दैत्य उगाए हैं। यह तीसरी रात है। पेड़ों का कद बड़ा होना शुरू हो गया। वह पहाड़ पर सोए हर व्यक्ति की बलि चाहते हैं। शाखाओं के नाखून पैने हो गए हैं। पेड़ पर लटके शव उन्मुक्त नाच रहे हैं। अगली सुबह मौसम साफ है। वह मेरे कंधे पर टिकी हुई है। सर्द चेहरे, बिखरे बाल, नीले होठों में हर व्यक्ति ज़ॉम्बी प्रतीत हो रहा है। उसकी आंखें खुलती हैं और बिजली की गति से पुनः घाटी की ओर दौड़ती है। हम उसे पकड़ने पीछे जाते हैं। वह पुकार रही है, अमर, अमर, लौट आओ, अपनी विनी के लिए लौट आओ। पेड़ बहरे हो चुके हैं। आज हेलीकॉप्टर का यह तीसरा राउंड है। किसी तरह 6 लोगों को बिठाया गया है। कंगन वाला हाथ मेरी ओर बढ़ता है। यह लक्षित कर एक बलिष्ठ भुजा मुझे ऊपर खींच लेती है। हेलीकॉप्टर के पिछले पहिए से एक साया लिपटा है। इस साए की शक्ल आहते के पेड़ के सायों से मिलती है। मेरी नींद पुनः उचट जाती है। पेड़ों पर लटके साए मेरी ओर बढ़ रहे हैं। वे विनी की ओर इशारा करते मुझसे कह रहे हैं, मह्यम सुहा, इदम मम, यह मेरा है, मुझे दे दो। Thanks for the intensive story. In the story, the rain is walking like a refrain. The background is rain and thunderstorm. And in the background of this rain and thunderstorm, she tries to portray a woman in distress. She tells out
tells us about a mother who doesn't want to part with her land, who doesn't want to part with her home. On the whole, she tries to bring us a slice of female reality. It's a well-crafted story, and thanks for it. And the session, I want to read a very small story, okay? And this story is about a woman whom I saw. That woman, she had a small white spot in her, small white spot on her thighs. And for that small white spot, she has to suffer whole life. And using the white spot as a pretext, I want to examine the role of woman as daughter, wife, and mother. How much respect does she get as a daughter and a wife and a mother? The white spot is only a pretext. Okay, I'm going to read it. It's a very, very small story. So every morning, Gauri Pohi is the central character. Gauri Pehi rose at dawn and rushed through her routine work. Getting up, she would sweep the house, the courtyard, take a hurried bath, and then enter into the kitchen. She would keep mumbling to herself as she fried fritters for the breakfast. And after everybody has finished breakfast, Gauri Pehi would start her second phase of work, chopping vegetable or cleaning fish. Sometimes she would sit for a while and rebuke somebody. She is completely out of her senses. It was not always like that. When Gauri Pehi's mother was alive, she hardly had any time to rest. Her mother was bedridden for years and had bed sores covered her body. Pehi's time passed nursing her mother. Now, after her death, she had these few hours for herself. All the 50 years of her life, Pehi in Assamese we call it aunt. Pehi had spent shining between the kitchen, the courtyard, and the margosa tree. That such a day would come to her life was beyond people's imagination. That light and dark crevices of her mind were in utter confusion. There Pehi was sitting on her haunches. Today it was an altogether different day for Pehi. So her breakfast was brought to her and they gave her warm water to bath, and also they provide her with a fragrant soap also, fragrant bar of soap also. Pehi was sitting on the bed, lifting her mekhla. Her hand touched the tiny white spot on her thigh. For 50 long years, the spot had been in the same place, the size of a small pea. She shuddered. Pictures started racing before her mind's eyes. She was then a girl with long, lustrous black tresses. Pehi saw herself as a bride. A stout man was dragging her from the room to the courtyard. The bride pulling her sadar to cover her head. Her teeth gritted to regulate her sobs. The man left her sprawling in the courtyard. He roared like a lion. They have cheated me into marrying this diseased woman. A few neighborhood women came to watch the scene. The man tried to raise the woman's mekhla to show the cause of his anger, but the bride pulled it down with all her might. A middle-aged man strode to her and, grasping her long hair, shook it vigorously. This witch, she has come to ruin my son's life. Then one man, young man, comes and welcomes Pehi, who is in utter confusion today because she is get a special treatment because her son is coming to fetch her. For long years, she lives in her father's home. And Ma,
Has she taken her bath? Outside Pehi heard the manly voice. Her brother's wife came in. Gauri, what are you doing? Gautam has already taken out the car and you are still not ready. Her younger brother's wife gave her a new silk mekhla and sador with a border. You need not wear this dress, wear this. Her elder sister-in-law handed her a ivory box. You must pay wear this light gold chain. You will be going with your son in his new red car. You should at least wear something on your neck. Her niece said she had come from her in-laws to bid farewell to Pehi. Pehi stepped up the room towards the well, but her sister-in-law stopped her. I have put warm water in the bathroom. You will also find the soap. Pehi lifted her hand to say something. Before marriage, she bathed in the bathroom, but after her return from her husband's home, they had stopped her from doing so and has written her off as a mad person. Mad woman, God knows only what she would do in the bathroom. Then Pehi remembers about her past when she was a beautiful bride. So the in-laws family tied her with a rope and put her on the back of a bullock cart. The 19-year-old nursing mother implored, begged and cried out her heart, but no avail. Her plight made even the cart driver shed tears. She made a vain effort to loosen the rope. She bled, milk dripping from her breast mixed with blood showed on the sadar. Then her sister-in-laws and her niece were packing for her. Her niece was saying, how can she go in one dress? Pehi's elder sister-in-law stopped, saw when she saw the handsome man washing her. Ma, are you ready? Let's go then. We have a long way to go. Pehi stared at the young woman. The sight of the shabby baby flashed before her mind's eye. Who would say that the handsome, bespectacled man was her son? Pehi was still. Someone was tying her hair into a neat bun. Pehi felt as if some unknown hand was rubbing away the vermilion from the parting of her hair, taking out her bangles and dressing her in a white garb. How many years have passed by? Pehi's luggage was loaded in her son's red car. The womenfolk sat surrounding her. Romola Zetai remarked, it is Gauri's sheer luck that she could die at her husband's place. Now they were talking about her son. How handsome Gauri's son, like a prince. Not only that, he is also a famous doctor. Poor thing had to grow tortured by a stepmother. Somebody wanted to force Pehi into the car. No, no, no. She forced her away from the car. So then her husband, her son, he thinks, so whether I am doing the right thing, taking her away, all these years she had stayed with you, but last days of her life, she will stay with her son. Pehi's sister-in-law came forward. No, no, it's all right. She's fortunate. At least she would die staying with you. All these years we have kept her. Pehi's two younger brothers were standing next to each other. A stench of touched their nostrils, the smell of their mother's bed sores. The maid Gauri. Suddenly everybody grew excited to put Pehi inside the car. Pehi wailed. She sobbed. No, no, she did not want to go. The picture of a bullock cart floated before her eyes. The cart driver standing with a pair of white and black bullocks, the shrill cry of the baby, the 19-year-old girl tied with a rope and left in the car. Then she cried again, no, no, no. The handsome young man looked at the old woman on the rear seat. He frowned. Was it a mistake? Pehi's father had bought a plot of land in her name right in the middle of the Guwahati city.
The thought brought some sort of solace to his mind. Everybody is ready. Everything is ready. Only a thumb impression and then a house, a chamber, and a nursing home in future. The car started moving. Pehi was wailing now. In her subconscious, she heard the cry of a baby. No, no, no. The young man looked again. How would Nomita put up with her? Even she did. What will people say? It is all right. Something should be done. She had already told his uncle that his mother needed treatment. He would send her to a mental asylum. Who would blame him? Yes, she should be treated. The waiting woman near the gate let out an uruli. So this is the daughter, wife, and the mother. I have seen that woman. जैसे भगवान कृष्ण ने यशोदा को अपने मुंह के अंदर पूरा संसार दिखा दिया था, वैसे ही एक महिला अपने छोटे से घर में पूरे का पूरा संसार बसा भी लेती हैं, दिखा भी लेती हैं, उसको भोग भी लेती हैं। और जो महिलाएं लिखती हैं, उनकी लेखनी में छोटी छोटी चीजों में हमें पूरा संसार नजर आता है, जिसका आज हमने यहाँ पर एक नजारा देखा। Since we have a little bit of time, if there are any questions from the audience, we would love to take them. No questions. So I was saying, if anyone has a question, nobody does. So we bring to an end this session. I would like to thank Srimati Orupa Patangia Kolita for chairing the session, and also Srimati Usha Upadhyay and Dr. Nidhi Agarwal for being panelists on this session and sharing their works with us. Thank you so much. We would like to photo op with you. Maybe. हमारा अगला सत्र 4:30 पर होगा। My inspiration in literature.
द्वारा आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्योत्सव में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र का शीर्षक है माय इंस्पिरेशन इन लिटरेचर। इस सत्र में जानने की कोशिश करेंगे कि जो लेखक हमें प्रेरित करते हैं उन्हें कहाँ से प्रेरणा मिलती है। Chairing this session is the prolific Tamil writer Sri R. Damodaran, aka Aravinda. May I request him to kindly come onto the dais, please? Sri Aravindan has written 26 books, 16 short serials, and 36 edited books to his credit. He has received President's Award for his remarkable contributions to classical Tamil and Best Researched Book Award by the Government of Tamil Nadu, which he has received twice. At the moment, he is Professor of Tamil and Chairperson of the Special Center for Tamil Studies at Jawaharlal Nehru University in New Delhi. May I also invite on stage Sri Dibyajyoti Sharma, who we hope to see in a while, Sri Yash Rena, who is an assistant professor in Dogri in the Department of Higher Education, Jammu and Kashmir. He has 7 research papers published in UGC approved journals and has also presented several research papers at various national and international conferences. He's a recipient of the Sahitya Akademi Yuva Puraskar for his Dogri Ghazal collection, Do Kandhe, and the Sahitya Akademi Translation Prize for Pichlag. May I now request Sri Geet Chaturvedi to join us on the dais. He's a noted Hindi writer. He has authored 12 books, including the bestseller poetry collections, Nyuntam Mein or Khushiyon Ke Guptachar. His latest book is Sim Sim. Its English translation by Anita Gopalan has won the prestigious Penheim Translation Grant, including awarded by PEN America, the recipient of numerous literary prizes, including the Raza Foundation, a fellowship for fiction writing. He was named amongst the 10 best young writers in India by the Indian Express. May I also request Srimati Lopa, alias Lopa Mudra, who is a Malayalam poet and translator, to join us on the dais, please. She holds a master's in English, has 2 poetry collections to her credit, and is the recipient of the Sahitya Akademi Yuva Puraskar and the O.V. Vijayan Award, among many other awards. Sri Indrajit Gule is a Marathi writer and poet. Kindly join us on the dais, please. He has 6 books to his credit and has been contributing to several literary journals in Marathi. He is the recipient of several awards and accolades. And Shweta Padma Satpati ji, kindly join us on the dais. She's a noted Sanskrit poet and writer, currently an assistant professor in Sanskrit literature at NSU Tirupati. She has authored more than 7 books, including 2 kavyas, 1 anthology of short stories in Sanskrit, and 4 critical appreciations on various aspects of Indian classical literature. She is a recipient of the Sahitya Akademi Yuva Puraskar and the Best Research Paper Award from Eastern Oriental Conference. May I also request Sri Dibyajyoti Sharma to join us on the dais, please. He is an Assamese poet and writer. He has published 3 volumes of poetry, the latest being Book of Prayers for the Non-Believer, and 4 books of translations and 2 academic books, besides numerous short stories and articles in journals. He was born in Assam and now lives in Delhi, where he works as a journalist and runs the independent publishing venture Red River. Red River today is known as one of the prominent independent publishers of poetry in English and English translation. Before I hand over the mic to the chair, just a request to all the panelists, we will try to keep ourselves to about 10 odd minutes each. Okay, thank you. Shri R. Damodaran, kindly take over. Dear friends,
Good evening to all. We know very well literature inspire society. That is, we know. Similarly, authors get inspired from literature. That is also nature. Both are parallel lines, inseparable from each other. One cannot be separate from the other. We don't allow separate. That is very, very important. I feel the human mind is a vast playground. I feel the human mind is a vast playground. It is a equivalent to agriculture land. Literature is cultivated in this land. Literature is not a collection of words. That is, not only words. A new society is created from words and ideas mingled with positive emotions. This literary society will improve the contemporary society. That is very necessary. This literary society will improve the contemporary society. This type of literary festival will help in that regard. We should conduct this literary festival in different parts of India. We should conduct this literary festival in different parts of India. This way, we can foster social harmony. In this section, creators of different languages from India are going to share their experience. I share my appreciation and congratulations to them. Thank you to all. Wait. Yes, serial. First, I invite Sanskrit scholar Chattopati. Please. Yes, Sanskrit. Okay. Okay. Chattopati. Don't worry, sir. This is my South Indian pronunciation. Don't worry. We can speak this. Thank you. Om Shri Venkatesaya Namaha. My humble pranam to all of you. Most respected chair, distinguished participants and dignitaries present here. At the outset, may I express my profound sense of gratitude to the authorities of Sahitya Academy for providing me this opportunity to take part in this unique Sahitya Utsav, which is largest literature festival of the world. I have been asked to present a few lines regarding my inspiration in literature. Friends, I am a continuous learner of Sanskrit literature and have been writing poetry and short stories in Sanskrit since my college days. My first short story in Sanskrit under the caption of Lobhasya Parinamaha Hitam was published in Sanskrit newspaper
magazine in Amrita Bhasha also in the year of 2006. At that time, I was a student of literature in National Sanskrit University, Tirupati. The story was related to one of the burning issues of the society, and the central idea of the story was given in the form of observation. The idea was too much greed for everything in disastrous. It was intended to bring some positive reformations in the society for creating a better living environment. After the publication of the story, a lot of phone calls were received by me, and almost all the readers appreciated me approach and style of writing the story. In fact, that note of the appreciations I got nearly 18 years back became a source of inspiration and encouragement for me to write more and more number of short stories in Sanskrit. I would humbly submit that I got the most coveted and inspiring recognition from Sahitya Academy by getting the Sahitya Academy Yuva Puraskar in the year of 2021 for my story book Katha Kalpalata. Katha Kalpalata is a collection of 42 short stories in Sanskrit written by me on various contemporary issues of the society and the environment. The purpose is not only to highlight the issues and challenges, but also to show some solutions and possibilities for leading a meaningful life in the society. A close observation of the society where we live has no doubt given me some inspirations to write in my own way. In each and every step, I have felt that some invisible power has been empowering and encouraging me to think something innovative and creative, something new. I felt that the divine blessings of Almighty and my revered gurus and guardians are always with me, for which I have been tempted for the creativity writing. Hence, it is rightly told by Mammata, a great poetician of 11th century, in this Kavya Prakash, that Shakti Nipunata Lokosastra Kavyadi Dabekhanat Kavyagya Sikhya Vyasa iti hetuhu sadudbhave. In fact, the inborn talent, the experience and expertise we learn from the environment after seeing various types of happenings and continuous practice taken together is the main reason of creation of original literature. Hence, I would humbly submit that these three components, that is blessings of Almighty and Gurus and my experience and continuous learning taken together has become the permanent source of inspiration and encouragement for me. Moreover, Vishnu Sharma, the author of Panchatantra, has influenced me a lot for writing stories in Sanskrit. Whereas Kalidasa, the great poet of Sanskrit literature, has become a continuous source of writing poetry. In this connection, I would like to mention that apart from writing short stories, I also write poetry in Sanskrit, and my first book titled Kavya Kairavam was published in the year of 2020, containing 18 poems. All these poems have been composed in traditional meters, Anushtup, Upajatihi, Vangsastam, etc. It is not out of place to mention that I have learned
the tricks of all these meters from my father and mother both. Learning is a lifelong process, and we can learn many things even from a child as well as an experienced person. It is told, Jukti Juktam Bachograhyam Bharatapi Sukatapi. We can also learn from our mother nature and our glorious culture. A true learner with inborn talent can become an original writer. अयिमान्यः विद्वांसः परिशेषे अहमेतदेव वक्तुम् इच्छामि यत् अयं दृश्यमानः वैचित्र्यपूर्णः संसारः अस्माकं गुरुः प्रेरणादायकश्च अस्य संसारस्य स्रष्टा अस्माकं सर्वेषाम् आशीर्वाददायकः मार्गदर्शकश्च अस्माकं परिवेशः सर्वश्रेष्ठः शिक्षकः सर्वोपरि भवादृशाः सहृदयाः पाठकाः एवं सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादातारः अस्माकमेव अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अहं कृतज्ञतां विनिवेदयामि तथा सर्वदा भवादृशानां गुरूणां सहृदयानां शुभेच्छूनाम् आशीर्वादं कामये इति उक्त्वा पुनरेकवारं साहित्य अकादेमी कर्तृपक्षेभ्यः साधुवादं विनिवेद्य विरमामि। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु साहित्योत्सवः, जयतु साहित्य अकादेमी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। नमस्कारः। थैंक यू। Congratulations, Professor. Not easy for Sanskrit. I know very well. 15 years before I was joined one Sanskrit scholar, Kavadarsham, Sanskrit to Tamil. Not easy. Female writer, Indian culture, mostly not possible. But you can win. Okay. Thank you so much. Dhanyawad. Next, Marathi creator Indrajit Gule. Indrajit. My inspiration in literature, मैं आपके सामने इस विषय पर मेरा जो लिखा है रख रहा हूँ। मैं एक ऐसे घर से आया हूँ जहाँ रोटी की भूख सबसे बड़ा सवाल है। भूख कई प्रकार की होती है, पेट की भूख, काम की भूख, दिल की भूख, दिमाग की भूख। रोटी आदमी को भगाती है और वह रोटी के लिए भागता है। इन सब में पेट की भूख से दिमाग की भूख तक जाने वाला सफर मेरी कविता है। अचानक ही मेरे अंदर से कविता कहाँ से उगाई? शायद वह खून से उगाई हो। मेरी माँ मेरी कविता का प्रेरणा स्रोत है। वह हमेशा दूसरों की समस्याओं में दौड़ती और आंसू बहाती। पिता विचारी थे। विचार और आंसू जब मिल जाते हैं, शायद तभी कवि का जन्म होता है। मेरी कविता का जन्म भी ऐसा ही था। कविता की मूल प्रेरणा क्या है? मुझे लगता है कि एक इंसान की आंखों में आंसू, इंसान का पसीना और इंसान के शरीर में बहता सच्चाई का खून, ये प्रेरणा मुझे मेरी माँ के खून से मिली। उसके पसीने ने सींचा है मुझे और उसके आंसुओं की धारा ने मुझे संवेदनशील बनाया, इंसान बनाया। मैं जीवित हूँ, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं जीवंत हूँ, यह भी महत्वपूर्ण है। मुझे जीवित और जीवंत रखने का काम मेरी माँ के आंसुओं ने किया और मैं कवि बन गया। वैसे तो मेरी पढ़ाई गिरते पड़ते हुई। घर में शिक्षा का कोई माहौल नहीं था। मुझे खुद उठना होता और बस्ता उठाकर स्कूल चलना पड़ता। पिता शराब के नशे में धुत पड़े रहते। 10वीं में प्रेमचंद जी की कफन कहानी पाठ्यक्रम में थी। मैंने वह कहानी पढ़ी।
वह कहानी तो मेरे घर में ही रोज होती थी। मेरे पिता शराब पीकर आते और माँ को मारते, घायल होने तक उसे मारते। प्रेमचंद जी की कफन कहानी पढ़कर लगा कि मैं ही प्रेमचंद हूँ, कफन मेरी ही कहानी है, ऐसा भी लगने लगा। उस समय स्कूल में अण्णाभाऊ साठे इनकी स्मशानातलं सोनं यह कहानी पढ़ी जा रही थी। कफन और स्मशानातलं सोनं, इन कहानियों ने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला। बीए होने तक मुझे किसी अन्य पुस्तक से गुजरा नहीं था मैं। मुझे सिर्फ पिता का शराब पीना और माँ का खेतों में खटना याद है। शायद इसी कारण से मैंने लिखा। हाल ही में जब मैं सोचता हूँ मेरे साहित्य में प्रेरणा कौन है, तो जवाब आता है मेरे पिता। अगर वे शराबी नहीं होते तो मेरा जीवन संवरता ही नहीं। पिता शराब पीकर माँ को बहुत मारते थे। जब मैं थोड़ा बहुत बड़ा हुआ और माँ को मारते समय मैंने पिता का हाथ पकड़ लिया, उन्हें उल्टे दो हाथ जड़े। यही मेरे जीवन की पहली बड़ी कविता और कहानी भी थी। तब से मैं माँ का सहारा बना और मुझे भी मेरा अस्तित्व मिला। संकट थे ही, संघर्ष होता ही था। इसी संघर्ष ने जीना सिखाया, लिखना सिखाया। अब लगता है जीवन का संघर्ष खत्म हो जाए तो मेरा लेखन भी खत्म हो जाएगा। संघर्ष ही साहित्य की मूल प्रेरणा होनी चाहिए, ऐसा भी लगता है। संघर्ष कभी खत्म नहीं होना चाहिए। संघर्ष के बिना हम निरर्थक है। गर्मी में, बारिश में, हवा में झूलते हुए फूलों को देखकर जीने की उमंग बढ़ जाती है। बेचारे फूल सुबह खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं। पूरे दिन खिले रहने की स्थिति में वे क्या क्या सहते हैं, धूप, हवा, बारिश, लेकिन वे कभी शिकायत नहीं करते। जितना जीवन मिला है उतना ही वे खिलकर जीवन का सम्मान करते हैं और वैसी स्थिति में भी सुगंध फैलाते हैं। उनसे जीने की और लिखने की प्रेरणा मिलती है। तब मैंने लिखा, कभी फूलों की आंखों में देखा है पानी, कभी फूलों की आंखों में देखा है पानी, बीतने के बाद भी गीत गाते हैं प्रार्थना का, सूखने पर भी सुगंध बिखेरना, आनंद गीत है यही जीवन का। मुझे लगता है प्रकृति भी साहित्य की बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैंने नामदेव ढसाल, दया पवार, नारायण सुर्वे, अर्जुन डांगरे, यशवंत मनोहर और अन्य कई लेखक कवियों का अध्ययन किया। नारायण सुर्वे की कविताएं मुझे प्रेरित करती थी। वे लिखते हैं, शंखनाद करके पाए ऐसा स्वर्ग कहाँ होता है, शंखनाद करके पाए ऐसा स्वर्ग कहाँ होता है, जिसके लिए हम अंदर से टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। उठो, उस कोने में रखी तलवार को खोजो। एक समय था जब मैंने उस पर अपनी किस्मत की धार लगाई थी। यह कविता मुझे बहुत करीबी लगी। स्वराज्य के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार उठाई थी। नारायण सुर्वे भी अपने हक के लिए तलवार ढूंढने की बात करते हैं। मुझे सुर्वे शिवाजी के वंशज होने का आभास हुआ। मराठी भूमि के वे सच्चे सुपूत लगे और सबसे महत्वपूर्ण कि वे मुझे अपनी बिरादरी के लगे। इसी भावना को मैंने शब्दों में लिखा, व्यक्त किया। मैं और मेरी शिक्षित बेरोजगारी, हाथ भट्टी पीकर, बीड़ी पीकर तपेदिक से ग्रस्त मेरे पिता, गुंडों की टोली में मेरा भाई, बिना शादी की बहन, इन सब की चिंता में 400 के पार शुगर हुई मेरी माँ, हम सब सत्य के आधार पर 21वीं सदी के मुहाने पर खड़े हैं, चिपकू की तरह, कीड़ों की तरह, जीवन की फीकी भागदौड़ लेकर। अंदर से 21वीं सदी कह रही है, गांधी के फैन हो जाओ। अंदर से 21वीं सदी कह रही है, गांधी के फैन बनो और सिर्फ सीधा चलना छोड़ दो, चैन से रहोगे, जियोगे और जीने दोगे। तो मैं सत्य का क्या करूं? सत्य का क्या करूं, यह प्रश्न जब तक मेरे साथ है तब तक मेरी कविता मेरे साथ रहेगी। इसकी मुझे आशा है। जब यह प्रश्न मेरे जीवन में नहीं रहेगा तब सत्य की प्रेरणा भी नहीं रहेगी। इसीलिए सत्य साहित्य की प्रेरणा बनकर ऊर्जा प्रदान करता है, ईमानदारी की राह चलने का सबक देता है। मेरा निजी अनुभव यही है। इसे मैंने किसी पुस्तक में नहीं बल्कि जीवन के अनुभव से जाना है। इसीलिए सत्य प्राणों से प्रिय है। इसीलिए मैं लिखता हूँ, मेरे देश के मरे हुए लोगों, मेरे देश के मरे हुए लोगों, जीवित हो जाओ, देश तुम्हारी राह देख रहा है। तुम खाते पीते हो, तुम घूमते फिरते हो, पर बोलते नहीं। तुम्हें पता है बोलने की कीमत मौत है। उससे बेहतर तुम मरे हुए की तरह जीना पसंद करते हो। यह तुम्हारी पसंद सराहनीय है। तुम्हारा अभिनंदन।
इसके बाद मैंने जो इस एक कविता इतनी लिखी, तो उससे महाराष्ट्र के चिंतक जो है डॉक्टर आह साळुंके को मेरी कविताएं पसंद आ गई। मुझे उनके विचार साहित्य पसंद आया। जीवन में पहली बार मैं उनके प्रेम में पड़ा, इतना कि प्रियतमा के प्रेम से भी अधिक मेरे दिल में एक गहरा प्रेम उत्पन्न हुआ। उनके पैरों पर अपने ओठ रखकर उन्हें चूमने की भावुक इच्छा ने उफान भरा। साहित्य में करुणा का जलस्रोत और विचारों के बगीचे उन्हीं के पास मैंने पाए। साहित्य के लिए, विचारों के लिए, शब्दों के लिए कितना करना चाहिए, कैसे करे, इसके लिए दिन रात सपने देखते लगा। इतिहास की प्रस्तुति में चारवाक, बुद्ध, राजा बलि, तुकाराम, इन सबकी लेखनी और विचारों के अनुसरण उनके सरल व्यवहार और कार्य क्षमता में बेहतरीन उदाहरण था। ऐसे समय में मैं उनका मित्र बन गया, वे मेरे मित्र बने। वे मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे साथ चलने लगे। मुझे लगा जैसे बुद्ध के छोटे रूप के साथ चल रहा हूँ। मैंने उनके साथ यह अनुभव प्राप्त किया कि हम बुद्ध की उंगली पकड़कर चल रहे हैं। यह भावनात्मक शब्द मोहक लग सकते हैं, लेकिन उनकी विचार शक्ति का बल अधिक मजबूत साबित हुआ। विद्रोही तुकाराम, इस पुस्तक ने मराठी संतों को क्रांतिकारी के रूप में स्थापित किया। उनकी क्रांतिकारी कार्यवाही युद्ध के समान थी। भाषा और अभंग साहित्य के बल पर मराठी जगत को संतों ने एक मजबूत दृष्टिकोण और उन विचारों पर चलने की शक्ति प्रदान की। अक्षर बोते हैं देह में संवेदन, यह संत तुकाराम के शब्द मराठी लोगों को संवेदना को समृद्ध करते हैं। यह सिर्फ भजन और कीर्तन तक सीमित कविता नहीं थी, बल्कि यह विस्तृत विचार मार्ग था। संतों का यह विचार विद्रोह के है, प्रतिरोध के है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के है। समता, समानता, दर्शन, निष्कपटता, वीरता, उदारता, सृजनत्व, यह तत्व विचारों के आधार है। इन सभी को अपने दिमाग में धारण करने वाला आज तक के सभी विचारक और उनके कार्यों का नजदीकी परिचय आह साळुंके के वैचारिक सत्संग में हुआ। उनकी प्रेरणा ने मुझे वैचारिक दृष्टि से जीवंत और ज्वलंत बनाया। संत चोखा मेला और कानोपात्रा मेरे गांव के संत है। गन्ना टेढ़ा होता है पर उसका रस मीठा होता है। नदिये के कुल टेढ़े, पानी मीठा, धनुष की कमान टेढ़ी, तीर निशान सीधा, क्यों भटके हो तुम बाहरी ढंग में। उन्होंने गन्ने, नदी, धनुष और की उपमा देकर समझाया है कि गन्ना टेढ़ा होने पर भी उसका रस मीठा होता है, नदी टेढ़ी होने पर भी उसका पानी मीठा होता है और धनुष टेढ़ा होने पर भी उसके तीर सीधे होते हैं। उसी तरह वे निचली जाति में जन्म लेने के बावजूद अपना अंतरात्मा की भावना को महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उन्हें शूद्र कहकर अपमानित नहीं करना चाहिए। चोखा मेला के विचार बहुत उच्च थे। वे अपने लेखन से दर्शाते हैं कि मानवता ही लेखन का सबसे बड़ा मूल्य है। आम्रपाली के बाद उनकी परंपरा में उतनी ही पवित्र, शुद्ध और चरित्रवान संत कानोपात्रा। एक वेश्या के घर में जन्म लेने के बावजूद कानोपात्रा विठल भक्ति में लीन रही और पारंपरिक वेश्यावृत्ति को त्याग कर दिया। वह अपनी गणिका प्रवृत्ति का त्याग न करते हुए अपने देह को उपयोग के लिए समर्पित करे, यह इच्छा स्थापित जन समुदाय की थी। संत कानोपात्रा ने अपनी जान न्यौछावर की, किंतु अपने सदाचार की राह नहीं छोड़ी। मैंने उनके अभंग का अध्ययन किया। संत कानोपात्रा की कहानी वास्तव में बहुत बड़ी प्रेरणा है। इस तरह के गांव में मैं पला बड़ा, रचता रहा। मेरे लेखन के दौरान संत चोखा मेला, संत कानोपात्रा के अभंग मेरे साथ निरंतर प्रेरणा के रूप में जागरूक करते हैं। उस काव्य में अभिव्यक्त जीवन अनुभव मनुष्य जीवन की पूंजी है। जैसे शब्दों में हो वैसे ही कविता में हो, ऐसा नारायण सुर्वे जी कहते हैं। उन्होंने लिखा है, अगर आप अपनी कविता से, साहित्य से अलग जीवन जी रहे हैं तो लोग आपका और आपके साहित्य का सम्मान नहीं करेंगे। आपकी कविताओं के मूल्य आप पर प्रतिबंध लगाते हैं। जब आपकी कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से लोगों को विचार बताते हैं, तब आप उन्हें व्यवहार में कैसे लाते हैं यह लोग देखते हैं। लोगों के लिए साहित्य जितना आदर्श होता है, उतना ही आपका आचरण भी आदर्श होता है। जब सभी से निराशा मिलती है, तब लोग लेखकों को आदर्श के रूप में देखते हैं। वह आदर्श जीवन कर्म रूपी एक व्रत है। भले ही आप 4 लाइनें लिखे, आपको अपनी उन 4 लाइनों की तरह जीना चाहिए।
उपदेश की दुकान खोलकर आप भावनाओं का बाजार नहीं लगा सकते। तुम्हें खुद उस दुकान का सामान बनना पड़ेगा। पाठकों को तुम्हारा स्वाद चखने दो, तुम्हें आजमाने दो, तब शब्दों को सही अर्थ प्राप्त होगा। मुझे लगता है पाठकों का आदर रखकर लिखना भी और जीना भी साहित्य में एक बड़ा मूल्य है। आप मानते हो या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि खुद को धोखा देकर आप दूसरों के लिए पाठ निर्धारित नहीं कर सकते। इसीलिए विचारों की तरह जीने में ईमानदारी मुझे अधिक प्रेरणादायी लगती है। इसीलिए मैं लिखता हूँ। मेरे समकालीन में कल्पना दुधाळ, आबा साहेब पाटिल, तुकाराम धांडे जैसे कवि इन सभी प्रेरणाओं को कविता में लेकर लिखते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं, उन सभी का उल्लेख मैं यहाँ टाल रहा हूँ। छोटा बच्चा होता है ना अपने घर में, वह भी साहित्य की एक प्रेरणा है। उसमें मासूमियत है, सच्चाई है। साहित्य का मतलब सच और मासूमियत होता है ना, इसीलिए लिख सकता हूँ। और मैंने लिखा, रात को सोते समय सिर में बस यूं ही खटकता रहता है। सुबह उठते समय सिर में सींग तो निकल नहीं जाएंगे, इसका डर लगा रहता है, क्योंकि दिन भर उतने पशु कृत्य किए होते हैं। मैं हर रोज सुबह अपना सिर जांचता हूँ, सिर पर सींग विंग नहीं उगे होते। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठता है। मनुष्य का जीवन जीने का और एक अवसर मिलने के लिए, मनुष्य का जीवन जीने का और एक अवसर मिलने के लिए। धन्यवाद। ये सर जी ने विनती की है। तो एक ज्ञानपीठ के बारे में एक कविता है और इसको संदर्भ भालचंद्र जी नेमाड़े का आया है। और हम कविता क्यों लिखते हैं और पढ़ते हैं, इसका ये है। खरंच ग्रेट आहे मराठी माती, खरंच ग्रेट आहे मराठी माती, कोरड्या घशाने ओरडणारी माणसं पाण्यासाठी पोचतायत. नेमाडे कोणत्या देशीवादाचं गाणं गायचं, नेमाडे कोणत्या देशीवादाचं गाणं गायचं, इथं देशीपेक्षा हातभट्टीवरच जास्त ठेका धरतात. मी कवी आहे म्हणतात, आई म्हणाली कविता कशा संग खातात हे एकदा सांगच मला. मी कवी आहे म्हणतात, आई म्हणाली कविता कशा संग खातात हे एकदा सांगच मला. तेव्हा मी विचार केला, त्या धर्माचं, ग्रंथांचं, साहित्याचं, सामानासुमानाचं, विद्यापीठाचं, विचारपीठांचं दळण एकदा परिस्थितीच्या जात्यात दळून घ्यावं म्हणतोय. बरं झालं नेमाडे तुम्हाला ज्ञानपीठ मिळालं, बरं झालं नेमाडे तुम्हाला ज्ञानपीठ मिळालं. तुमच्या या मराठी मातीत आम्ही भाकरीच्या पिठालाही महाग आहोत. पण खरं सांगतो, कविताच तेवढी तगवून ठेवते माझ्या आत्म्याचा प्राण. म्हणून आईला म्हणालो, अगं कविता श्वासासंग खातात, कविता श्वासासंग खातात, कविता श्वासासंग खातात. धन्यवाद. धन्यवाद इंद्रजीत. I can understand your feeling. I cannot understand, I can understand your feeling. थोड़ा थोड़ा मालूम हिंदी. बहुत धन्यवाद. Next, from Dori language, Yash Raina. नमस्कार। आदरणीय मंच, सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकार बंधुओं, मैं डोगरी भाषा से यश रैना। एक्चुअल में मैं एक थोड़ी बहुत तुकबंदी की कोशिश करता हूँ। शायरी का विद्यार्थी हूँ, तो एक पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे बंद के लिखना मेरे बस की बात नहीं थी। फिर भी जो कोशिश हुई है, इसको पहले डोगरी में लिखा था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं यहाँ हिंदी में ही प्रस्तुत करना चाहूँगा कि 4 वर्ष पूर्व हमारा घर कच्चा ही था। फर्श, दीवारें, छत सब कुछ कच्चा।
छत में लगे हुए लकड़ी के बीमों पर काली चिड़िया को मिट्टी और घास फूस के तिनकों से घोंसला बनाते देखा है। घोंसला बन जाने के कुछ दिनों बाद चिड़िया उसमें अंडे देती थी। फिर चिड़िया कई दिनों तक उन अंडों पे ही बैठी रहती थी। वही मादा होती थी शायद। और एक आसपास ही कहीं लगे हुए कील या बिजली की लटकती हुई तार पे बैठकर मादा होने का सबूत पेश करता था। कुछ ही दिनों के बाद हम घोंसले से ची ची की मधुर ध्वनि सुना करते थे। फिर देख हम देखते कि दोनों चिड़िया सिर्फ निगले बिना अपनी अपनी चोंच में कुछ दबाकर घोंसले के पास पहुंचकर एक बार ची की ध्वनि निकालती तो घोंसले से किसी वर्ष 2-3 तो किसी वर्ष 4-5 बच्चे एक साथ ची ची की ध्वनि करते हुए एक साथ मुंह खोलकर घोंसले से बाहर लपकते थे। दोनों चिड़िया बिना किसी भेदभाव के बारी बारी सभी बच्चों के मुंह में चोंच में दबे हुए कीड़े मकोड़े को ठूंस देती थी। यह सिलसिला भी थोड़े दिनों तक ही रहता था। बच्चे बड़े हो जाते और घोंसले में दिन ब दिन ची ची की मधुर मधुर ध्वनि लुप्त हो जाती। पीछे रह गए नर मादा कभी कभी गर्मी की दोपहर में एक घोंसले में तो एक लटकती हुई तार या फंसी हुई कील या खूंटी के ऊपर तनिक जोर जोर से ची ची करते। कभी कभी सांप या बिल्ली के दिख जाने पर भी वह ऐसी ही ध्वनि निकाला करते थे। यह कहना मुश्किल है कि वह खुशी, विलाप, डर या रुदन के भावों में से कौन सा भाव प्रकट करते होंगे। बरसात के मौसम में वह दोनों चिड़िया भी जंगलों, पर्वतों और नदी नालों में कहीं गुम हो जाते थे। प्रतिवर्ष माघ फाल्गुन मास में फिर से 2 चिड़िया आ जाती थी। फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता था। घर के पशु घर में 2-3 गायें, 1-2 भैंस और 4-5 भेड़ बकरियां भी हुआ करती थी। गाय भैंसों को अपने हाथों से घास या कभी कभी रोटी का एक एक टुकड़ा अपने हाथों से खिलाने का सौभाग्य मिलता रहता था। उनका गोबर हाथों से उठाकर और टोकरों में भरकर खेतों में डालने का मौका भी मिलता रहा। कभी किसी काम से हफ्ते 2 हफ्ते के लिए अगर पशुओं के साथ नहीं मिल पाते तो अंतराल के बाद मिलने पर उनकी आंखों से बहता हुआ पानी दिखता तो अपनी आंखें भी भर जाया करती थीं। भेड़ों और बकरियों के साथ भी कुछ अधिक लगाव रहा। पहले लगता था कि इनको सिर्फ पालने के लिए ही रखा जाता है, लेकिन शहर में आकर देखा कि किसी किसी दुकान पर बिना खाल और मुंडी के टंगे हुए और सिर्फ पूंछ पर बचे हुए बालों से पता चला कि ये वही भेड़ बकरियां होती हैं जिन्हें हम गांव में पालते हैं। उसके बाद इस शाकाहारी मन ने यह निर्णय लिया कि अब इन्हें पालेंगे ही नहीं। फिर एहसास होने लगा कि पशुपालन ना सही, खेतीबाड़ी ना सही, जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पढ़ने में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। पिताजी के घर पर रखे हुए रेडियो पे गीत सुनने की आदत सी हो गई। आदत भी ऐसी कि सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे रात्रि के 11 बज जाया करते थे। गीत सुनने का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मन धीरे धीरे शांत सा होने लगा। पहली वाली छटपटाहट जाती रही। मन स्थिर होने लगा और पढ़ाई की तरफ रुख होने लगा। 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार 10वीं कक्षा पास कर ली। उसके बाद पीएचडी की उपाधि प्राप्त होने तक मन पढ़ाई पर टिका रहा। 4 दशकों की जीवन यात्रा में लगभग 2.5 दशक साहित्य से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हो रहा है। 4 दशकों में से पहले 2 दशक ही सही अर्थों में स्वच्छ जीवन प्रतीत होते थे, क्योंकि इन दशकों का अधिकतर समय माता-पिता, भाई-बहनों और आस-पड़ोस में व्यतीत हुआ है। हमारा गांव जम्मू कश्मीर के दुर्गम तथा ठेठ पहाड़ी क्षेत्र में है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र प्रकृति संपदाओं से तो भरपूर हैं, लेकिन आज भी स्कूल, सड़क और गाड़ी तक पहुँचने के लिए सीधी चढ़ाई, घने जंगल और साफ पानी के बहते हुए नाले पार करने पड़ते हैं। वैसे यह सब वहाँ के जनजीवन की दिनचर्या में शामिल है। रास्ते तो ऊबड़-खाबड़ हैं ही, गाड़ियाँ चलने वाली सड़क यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाते-पहुँचाते नानी को ज़्यादा से ज़्यादा याद करवाती है। ये बात अच्छी है या बुरी, पता नहीं। किंतु हाँ, यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसे स्थानों पर साहित्यिक सम्मेलन होते होंगे या नहीं। हमारे वहाँ साहित्य का अर्थ आज भी स्कूली कक्षाओं में पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकें ही है।
बीच में कुछ एक लोग रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन पे या कोई समाचार इत्यादि पढ़कर भी साहित्य की विभिन्न विधाओं का आनंद प्राप्त कर लेते हैं। इन स्थितियों और परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर यह कहना आसान नहीं कि साहित्य में मेरा प्रेरणा स्रोत क्या रहा होगा या क्या नहीं रहा होगा। फिर भी कुछ एक बिंदुओं पर ध्यान गया तो लगा शायद इन्हीं में से कोई प्रेरणा स्रोत भी रहा है। पिताजी अध्यापक थे। वह कभी-कभी मातृभाषा डोगरी में कविता भी कहा करते थे। उनके मुख से सुनने तथा उनकी हस्तलिखित कविताओं के पढ़ने के अवसर प्राप्त हुआ करते थे, लेकिन कोई खास प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से पिताजी की कविता कहने का शौक धीरे-धीरे शायद दम तोड़ गया होगा। कविता को छोड़कर जीवन के हर क्षेत्र में उनके दमदार कार्यों की आज भी हमारे इलाके में लोग सराहना करते नहीं थकते। सही अर्थों में काव्य शौक का उनका दम टूटा नहीं बल्कि अनायास ही मेरे मन के साथ जुड़ गया। 10वीं कक्षा में पहली बार अपने सहपाठियों को 12 महीने सालै दे शीर्षक कविता सुनाई। कविता खुद मातृभाषा डोगरी में लिखी थी। हम सभी विद्यार्थी साथी हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी में ही कविता सुनते पढ़ते आ रहे थे। उस कविता को सुनकर सभी सहपाठी खुश हुए। काफी वाहवाही मिली। वाहवाही का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। वही लालच कभी कभार कोई नई तुकबंदी करवाता रहता था। 12वीं कक्षा तक हिंदी विषय ही पढ़ा, जिसके पाठ्यक्रम में काव्य तथा कथा साहित्य को पढ़ने समझने के अवसर मिलते रहे। महाविद्यालय में पहुंचते पहुंचने पर बीए प्रथम वर्ष में आर्ट्स विषयों के साथ डोगरी भाषा को भी अपना विषय चुना, जिसके पीछे का कारण एक वाहवाही का लालच था तो दूसरा मातृभाषा का आसानी से समझ आ जाना भी था। संयोगवश 10वीं कक्षा के एक विद्यार्थी साथी जो मुझसे एक वर्ष पूर्व ही उसी महाविद्यालय में द्वितीय वर्ष के छात्र बन चुके थे, ने हमारे डोगरी भाषा के प्राध्यापक को यह बात बता दी थी कि उनकी कक्षा में इस वर्ष यश नाम का एक विद्यार्थी आया है जो डोगरी भाषा में कभी-कभी कविता नुमा कुछ लिखता है। जब उन प्राध्यापक महोदय से भेंट हुई तो उन्होंने काफी सहायता की। उस समय राजकीय महाविद्यालय उधमपुर द्वारा प्रकाशित की जाने वाली वार्षिक पत्रिका देविका में एक गद्य लेख को स्थान देकर उन प्राध्यापक महोदय ने मानो मुझे खुशी के 7वें आसमां पे पहुंचा दिया। ब्लैक एंड व्हाइट में और किसी पत्रिका में अपने नाम के साथ प्रकाशित उस गद्य रचना को मैं सभी को दिखाते दिखाते फूला नहीं समाता। उन्हीं प्राध्यापक महोदय ने एक बार जम्मू विश्वविद्यालय में डिस्प्ले योर टैलेंट के अंतर्गत काव्य प्रतियोगिता में जाने का अवसर प्रदान किया। उस प्रतियोगिता में शामिल होने के बाद मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी का एहसास हुआ, क्योंकि वहां पर सभी प्रतिभागी इतने प्रतिभाशाली थे जिनके सामने मैं शून्य के बराबर भी नहीं था। प्रतियोगिता में पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थानों में से कोई भी प्राप्त नहीं होने की शर्मिंदगी के साथ जब उन प्राध्यापक महोदय के साथ भेंट हुई तो उन्होंने विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में भाग लेने की तारीफों के पुल बांधकर मुझे शर्मिंदगी में डूबने से बचाया। हाँ, एक बात अवश्य हुई कि उस प्रतियोगिता के कारण विश्वविद्यालय की चहल-पहल और रंगीनियत मन में कर घर ज़रूर कर गई। उसके बाद जगते-जगते ही विश्वविद्यालय में पहुंचने के स्वप्न आने लगे। जैसे-तैसे जम्मू विश्वविद्यालय के डोगरी विभाग में स्नातकोत्तर के लिए पहुंच ही गया। डोगरी विभाग के सभी प्राध्यापकों को भी यह बात बताई कि मुझे लिखने का शौक है। सभी प्राध्यापकों ने भी अपने-अपने हिसाब से अलग-अलग साहित्यिक संस्थाओं, रेडियो स्टेशन तथा दूरदर्शन इत्यादि से जोड़ने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विश्वविद्यालय, साहित्यिक संस्थाओं, रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन वगैरह में कवि गोष्ठियों तथा एमए डोगरी के दौरान एक बदलाव जरूर आया। कविता की जगह गज़ल में रुचि बढ़ने लगी। गज़ल सुनने, पढ़ने तथा लिखने का शौक बढ़ता गया। मीर, गालिब, बटालवी, वेदपाल दीप, विजय वर्मा, मोहन सिंह जैसे अपनी-अपनी भाषाओं के महान शायरों को पढ़ा, जिन्हें पढ़ने के बाद यह महसूस हुआ कि गज़ल एक ऐसी विधा है जिसकी अनूठी शब्द बुनने की प्रक्रिया तथा भावों की भिन्नता पाठक और श्रोता को अत्यधिक प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यह एक ऐसी विधा महसूस हुई जो प्रभावित करने में अधिक समय नहीं लेती। इसे सही अर्थों में समझने के लिए समय ज़रूर लग सकता है।
नबे तुले शब्द गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं तो भावार्थ गागर में से सागर उड़ेलते नजर आते हैं। इस सब का नतीजा यह निकला कि वर्ष 2010 में कुछ मित्रों की आर्थिक सहायता से दो कंडे नामक एक गजल संग्रह वजूद में आया, जिसे वर्ष 2012 में साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात गुजराती तथा बांग्ला भाषाओं के एक एक उपन्यास का अनुवाद कार्य भी हुआ। इनमें से गुजराती भाषा के उपन्यास आंग्लियात के अनुवाद पे वर्ष 2017 के अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खैर, यह सब चलता ही रहता है। अब डोगरी भाषा में अधिकतर साहित्यकार मुझे डोगरी गजल के विद्यार्थी के रूप में ही पहचानते हैं। अब वाहवाही सुनने का लालच चस्का बाकी नहीं है। अब सिर्फ एक जिम्मेवारी है, और वह ये कि ये जो मातृभाषा हमें यहाँ तक लाती है, हम भी तन मन धन से उनके साथ जुड़े रहें और उनके पूर्ण विकास के लिए अपना अपना यथाशक्ति योगदान अवश्य प्रदान करें। अंत में मैं साहित्य अकादमी नई दिल्ली का हृदय तल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो समय समय पे ऐसे साहित्यिक महाकुंभों का आयोजन करवाकर मेरे जैसे कुएं के मेंढक को महासागर में स्नान करवाने के अवसर प्रदान करती रहती है। यह साहित्य अकादमी नई दिल्ली के कर्मठ कार्य ही हैं, जो बिना किसी भेदभाव के भारत की हर भाषा को समान दृष्टि से ही नहीं देखते, बल्कि हर भाषा के विकास में कार्यरत हर सैनिक का भी भेदभाव रहित रूप से मनोबल बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। धन्यवाद। एक डोगरी भाषा में एक कविता है, उसका शीर्षक था नहीं बिसरिया कदें, नहीं भूला कभी, कभी नहीं भूला। किश कुदरती नजाम पक्के मिगी के लोड़ है दसने दी, जानी जान जग सारा न किस सोचे हबारा, फी भी कदें कदें मन पंछी टपोलियां मारी लांदा दे सारी, गलांदा दिखा के आए की आए कुन आए, जो मुक्ता है राती दा चौथा पैर ले आउंदा लोई दी लहर, कुन बजालदा सूरजे की राती दी डूंगी नींदरे चा, लगदे सबैखा छपदा छपदा त्रेलू दे मोतियां ने मूंह जन धोई है, सुहागनी दा बिंदलू जन छप्पी छप्पी दिखदा किंगरें चा, ओ की नहीं बिसरिया जगना कदे, वो दिख बूटेंगी लगदा बाहर है अज, कुन आया कदू आया आई है इन्हें की सजाया, कैंबलू है पर कैंबलू लगे तेंदलू है पर तेंदलू लगे, खोड़ है साड़ी है आख खोड़ है साड़ी है नक है दडूनी है बही है गरगल है जमीरी है, कियां उह लगा जे किश लगदा आया, की नहीं इन्हें बिसरिया फुलना फलना कदें। सर अगर टाइम हो तो एक दो बंदी है, इसका तो खत्म हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। यक्ष जी बहुत धन्यवाद। He feel equal to mother. He can speak Dori language. At that time, you understand. He feel equal to mother. That is very, very important for mother tongue. Thank you so much. Next, coming from Malayalam, creator Lo Mathura. Namaskar. When I stand here to tell you something about my inspiration in literature, I am reminded of the title of K.A. Abbas' autobiography, I Am Not an Island. No writer is an island, and so am I. I am the humble part and parcel of a long stream of writers who have been changing the world with their mighty words. I am Lopamudra, poet from Kerala, and I used to express my thoughts and emotions through my mother tongue, Malayalam. I think
Malayalam is the twin sister of Sanskrit. Both these languages originated from the Indo-European family of languages, and both have similar traits in vocabulary and expressions. Sananda Rupam, Sakala Prabodham, Ananda Danamrita Parijatam, Manushya Patmeshu Ravi Surupam, Pranavmi Tunjatedu Padam. When I ask myself, who is the writer inspired me most, I feel rather confused. And I can't quote a particular name. There are so many writers, so many poems, so many enchanting memories. The lines I recited is an anonymous poem about Tunjathedutachan, the father of my language. To all the people writing in Malayalam, Edutachan may be the first source of inspiration. There are so many works like Adhyatma Ramayanam Kilippaattu, Mahabharatam Kilippaattu, Harinama Kirtanam. To his credit, he used the Rona Kilippaattu to express his words. It is telling things with the help of a parrot. Though his works are based on pure religious bhakti themes, he taught me the importance of different words, the inevitability of unique words in a writer's career. In Ramayana, he wrote, Varidhi Tannil Tiramalakal enna pole, Bharati Padavali Tonnanam, Kale Kale, Parade Salakshanam, Menmel Mangalashile. It was his sincere wish to have words like endless waves in an ocean. I proudly remember some other writers and inspirers in my language. The first and foremost one is G. Shankarakurupu, the first Jnanapith recipient of India. He was a mystic poet, and his poems are full of rich imageries. His poem, The Song of the Star, Nakshatra Geetam, is very relevant. In it, he wished to have the life of a star. Even in burning, he wishes to spread light to the world. The lines are, Eriyum Dukkardramam ende Jeevithathinte, Tiriyil Jwalikkette, Divyamam Snehajwala. ജീവിതം എനിക്കൊരു ചൂളയായിരുന്നപ്പോൾ ഭൂവിനാ വെളിച്ചത്താൽ വെണ്മ ഞാൻ ഉളവാക്കി. Malayalam is a marvelous language with so many great writers like Idasheri Govindan Nair, Vailopalli Sridhara Menon, N.N. Kakkadu, Sugata Kumari, Akkitam, K. Sachidanandan, Vijay Lakshmi, and many, many others. All of them tried to create rooms of their own. Idasheri's poem, Purappani, Building a House, is his manifestation of poetry and creative process. പല നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രുചിപ്രഭേദങ്ങൾ, പല സംസ്കാരത്തിൻ പ്രയോഗരീതികൾ. Shall I recite? ഒടുവിലൻ പുരപ്പണി വന്നു കാണും ഒരാൾ, കലർപ്പിന്റെ കലവറ പോലെ ഉയരുമീ ഗൃഹം നടന്നു കാണുമ്പോൾ, ചിരിച്ചാലും കൊള്ളാം കയർത്താലും കൊള്ളാം, പറഞ്ഞു പോകരുത് ഇതു മറ്റൊന്നിന്റെ പകർപ്പെന്നു മാത്രം. It means my house may not be good. It may have many, many defects. It may be a mixture of different cultures and tastes. It is not like Taj Mahal or any other beautiful building, but it is unique. Every writer should be unique and different. He should use different words to express his emotions. He should create a space, a room of his own. And above all, he should have a humanitarian concept. I would like to quote the lines of the famous poet Harindranath Chattopadhyaya. I dipped my pen in mine own blood to write songs for men. A writer should write for his fellow beings, fellow human beings. My father died at the age of 2. And then on, I was looked after by my grandfather, who was a voracious reader. He told me that if you read 1,000 poems, you will be a half poet. Being a child, I took it mathematically
and thought that if I read 2000 poems, I will be a full poet, a perfect poet. Now, being old, I can comprehend what he meant. A good poet should be a good reader too. Let reading and writing make us all strong. I'm so much thankful to Kendra Sahitya Academy for inviting me to this function. And I'm so much proud to be here to share my words with all of you. I wish all fellow writers here have great creative moments, great sparks from heaven. Thank you. Thank you, Lo Mudra ma'am. Tamil also very close with Malayalam, culturally and linguistically, very, very close Malayalam. I can understand your Malayalam also. Thank you so much. The next creator, Geet Chakrodi from Hindi. आप सभी को नमस्ते। आदरणीय अध्यक्ष महोदय दामोदरन जी, सम्माननीय मंच, सभागार में उपस्थित हिंदी की अप्रतिम लेखिका डॉक्टर उर्मिला शिरीष जी और सभी मित्रों, सबसे पहले तो मैं साहित्य अकादमी को बधाई देना चाहता हूं कि इतना शानदार उत्सव इतनी कामयाबी के साथ संपन्न किया, और उसके बाद धन्यवाद कहना चाहता हूं कि मुझे इस उत्सव में सहभागी होने का अवसर प्रदान किया। ज्यादा नहीं, कुछ छोटा सा ये वक्तव्य है, साहित्य में मेरे प्रेरणा स्रोत। 3 वाक्यों ने साहित्य और जीवन के प्रति मेरी सोच बदली है। मैं आज वे तीनों वाक्य आपको सुनाऊंगा। मेरे परिवार में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। मुझसे बड़े दोनों भाई बहन जासूसी उपन्यास पढ़ते थे। मेरा भी बड़ा मन करता था कि मैं जासूसी किताबें पढ़ूं, उनके भीतर की जादुई दुनिया को जानूं, रहस्य और रोमांच के समंदर में गोते लगाऊं। लेकिन वे दोनों मुझे जासूसी किताबों को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। एक दिन मेरी पढ़ाकू बड़ी बहन ने मुझसे कहा, तू अच्छा बच्चा है, तू प्रेमचंद पढ़ा कर। ये पहला वाक्य था जिसने मेरे जीवन को बदला। तब से मेरे दिमाग में ये बात घुस गई कि अच्छे बच्चे प्रेमचंद पढ़ा करते हैं, यानी वे लोग हल्का साहित्य नहीं, गंभीर साहित्य पढ़ते हैं। और इस तरह इस वाक्य के माध्यम से मेरे जीवन में प्रेमचंद का गंभीर प्रवेश हुआ। मुझ पर उनकी कहानियां पढ़ने की रफत चढ़ गई। 13 साल की उम्र में जब पहली बार मेरी किसी रचना का प्रकाशन हुआ तो वो कहानी थी बच्चों की कहानी। मेरी बड़ी बहन की प्रेरणा और प्रेमचंद की छोटी सरल सहज कहानियों ने मेरे भीतर एक लेखक को जन्म दिया था। बड़ी बहन ने मुझे थोड़ा और प्रोत्साहित किया। फिर मुझे जयशंकर प्रसाद की किताब कामायनी दी। इस तरह मैंने फिलॉसफी और आधुनिक कविता इन्हें पहचानना शुरू किया। मुझे कामायनी के कई पन्ने कंठस्थ थे। मैं ये नहीं कहता कि 13-14 साल की उस कच्ची उम्र में मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि साहित्य में समझ से ज्यादा महत्व आनंद का है। मुझे कविता में, कहानी में, साहित्य में आनंद आ रहा था, और यही सबसे बड़ी बात थी। भाषा मेरे लिए दूसरी त्वचा की तरह हो गई थी। जब किसी से या खुद मुझसे भाषा की कोई गलती होती तो मुझे उतना ही दर्द होता था जितना त्वचा पे सुई चुभोने पे होता हो।
16-17 साल की उम्र तक तो मैंने अंधाधुंध तरीके से लिखना शुरू कर दिया। कभी कभी कुछ चीजें छप भी जाती थी, लेकिन मन में संतोष का भाव नहीं आता था। तब एक दिन कई भाषाएं जानने वाले मेरे पिता ने मुझसे कहा, अगर तुम एक पंक्ति लिखना चाहते हो तो तुम्हारे पास 1000 पंक्तियों का अध्ययन होना चाहिए, इसलिए लिखो कम, पढ़ो ज्यादा। ये दूसरा वाक्य था जिसने मेरे जीवन को बदला। मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, खूब सारी किताबें। मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य पढ़ा। हिंदी में आज भी मेरे सबसे पसंदीदा लेखक वही हैं। मुझे अज्ञेय और मुक्तिबोध ने समान रूप से प्रेरित किया। मुझे महान कथाकार निर्मल वर्मा, बौद्ध लेखक कृष्णनाथ, इन्होंने हमेशा ही अपने शब्दों से अपनी तरफ बुलाया। मुझे कालिदास की सौंदर्य चेतना ने रिझाया। होमर के जटिल आख्यानों और दांते की गहन दार्शनिक अंतरधाराओं ने मुझे अपने वश में कर लिया। महाभारत में वेदव्यास जब कहते हैं, याद रखो संसार में मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, तब मैं हिंसा, क्षुद्र राजनीति और कपट से भरे आज के इस दौर में मनुष्यता का महास्वप्न देखता हूं और उससे प्रेरित होता हूं। फ्रेंच लेखक मार्सेल प्रूस्त, उनका उपन्यास है 7 खंडों में बहुत बड़ा, इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम। ये किताब मुझे हमेशा प्रेरित करती है। उस उपन्यास में एक दृश्य है, जब लेखक मर जाता है तो उसकी लिखी किताबें फरिश्तों जैसी हो जाती हैं। उन किताबों के पन्ने पंखों में तब्दील हो जाते हैं और तब वे किताबें पंख लगे फड़फड़ाते हुए फरिश्तों की मानिंद हो जाती हैं। तो वे फरिश्ते पंख फड़फड़ाते हुए अपने लेखक की आत्मा की रक्षा करते हैं। ये दृश्य, ये मेटाफर मुझे बहुत सुंदर लगता है। इसीलिए मैं अपने प्रिय लेखकों के चित्र अपने पीछे दीवार पे लगा के रखता हूँ। इसीलिए मैं अपनी प्रिय किताबों को अपने सामने मेज पे फैलाए रखता हूँ। तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रिय लेखक मेरी निगरानी करते हैं। मेरी प्रिय किताबें हर समय मुझे देखती रहती हैं, मुझ पे नजर बनाए रखती हैं। ये एहसास मुझे अपने लेखन कर्म के प्रति गहरी जिम्मेदारी से भर देता है। सिर्फ इंसानों और किताबों ने ही नहीं, चीजों और जगहों ने भी मुझे उतना ही प्रेरित किया है। ये तो कोई नहीं जान पाया है कि अनुभूतियों की गंगोत्री कहाँ से निकलती है, लेकिन साहित्य का गहरा रिश्ता जगहों के साथ होता है। भौगोलिक जगहें और मानसिक जगहें। मुंबई यानी मेरा शहर, उसमें भी खास तौर पर नरीमन पॉइंट, अरब सागर और लोकल ट्रेनें और काम पर जाते लोग और काम से लौटते हुए लोग, ये सब मिलकर मुझे जीवन की अजीबोगरीब तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ अनुभव ऐसे हैं जिन्हें मैं किसी से नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरी आत्मा पे उनका जहर वैसे ही चढ़ता है जैसे बिच्छू का जहर चढ़ता होगा। कभी कभी वो जहर मुझे लिखने के लिए प्रेरित करता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनके पास सिर्फ एक प्रेरणा हो। मैं एक साथ कई परंपराओं से आता हूं, हिंदी, मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और सिंधी साहित्य की परंपराओं से आता हूं, इसलिए मेरी प्रेरणा के स्रोत कई। जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो पाता हूं किताब, इंसान, जगहें, चीजें, ये सब तो बाहर की चीजें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। लेखक की असली प्रेरणा तो खुद उसके भीतर होती है, जिसे वो महसूस तो कर रहा होता है, लेकिन जिसे वो कभी जान नहीं पाता। जैसे कस्तूरी मृग, कस्तूरी उसके भीतर होती है, वह उसे जान नहीं पाता, उसकी खुशबू के पीछे दौड़ता रहता है। ठीक उसी तरह लेखक भी अपनी प्रेरणाओं को कभी ठीक से जान नहीं पाता, बस प्रेरणाओं की खुशबू के पीछे दौड़ता रहता है। उस खुशबू को वो कभी शब्दों में लिख नहीं पाता, या शायद लिख लेता है,
या शायद जिस दिन लिख लेगा उस दिन उसके लेखन की यात्रा, उसके लेखन की प्यास वहीं मिट जाएगी, या शायद कई गुना बढ़ जाएगी। किसे पता, किसे पता? क्योंकि मैं कुछ भी पूरे यकीन के साथ नहीं कहता, हर चीज को संदेह की निगाह से देखता हूं। अर्जेंटीना के महान लेखक थे होर्हे लुइस बोर्हेस। 80 साल की उम्र में उन्होंने एक बात कही थी एक भाषण के दौरान कि साहित्य में 6 दशक गुजारने के बाद मेरे पास आपको देने के लिए संदेह के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं हर बात को संदेह से देखता हूं। ये तीसरा वाक्य है जिसने साहित्य और जीवन के प्रति मेरी सोच बदल दी। अब मुझे लगता है कि कला में कुछ भी नक्की नहीं होता, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता, हर चीज बदल जाती है। इसलिए विश्वास को कभी तौलना हो तो संदेह के तराजू पे तौलना। अंत में बोर्हेस के शब्दों को उधार लेकर मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे भीतर वे सारे लेखक हैं जिन्हें मैंने पढ़ा है, मेरे भीतर वे सारे लोग हैं जिनसे मैं मिला हूं, मेरे भीतर वे सारे शहर हैं जहां मैं रहा हूं, मेरे भीतर वे सारी स्त्रियां हैं जिनसे मैंने प्यार किया है। मैंने अच्छा बुरा जो भी लिखा, इन सब ने मिलके मुझे प्रेरित किया है। मुझे यकीन है कि प्रेरणाओं का ये कोरस, इंस्पिरेशन का ये ऑर्केस्ट्रा मेरे बैकग्राउंड में हमेशा बजता ही रहेगा, बजता ही रहेगा, बजता ही रहेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चक्रवर्ती जी, धन्यवाद। I feel you will become a Chakravarti of Hindi poem or Kavida Mandalam. Sure. Thank you. Next creator coming from Assami. Uh, 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 Div- Divya Jyotish Sharma. Hello. Thank you for this opportunity to speak at this grand stage. Instead of speaking about literature in abstract, I would like to talk about books. I have a healthy, rather unhealthy obsession with books. Books as objects, books as cultural artifacts. I think this was one of the reasons why I became a publisher. I run a small publishing house called Red River, based in Delhi. I want to live vicariously through the writing of other people. I want to be a part of this mysterious process, how a seemingly humble manuscript becomes a beautiful book. There are many ways to express this topic of our discussion in the evening, my inspiration in literature. However, I would like to, I am here to represent for some mysterious reason, Assamese literature, a language which is my mother's tongue and in which I no longer write for various reasons, but from which I translate. I grew up reading and writing Assamese until I shifted from Assam to come to another state to do my master's in 1997. And since then, for various reasons, I had to shift to writing into English. But here I want to talk about Assamese literature and how it inspired me. I grew up during the post-internet age, so books were the only source of escape, the only source of knowledge. So I started reading at a very early age because both my parents were voracious readers, and we had a very fairly well-stocked home library. But when I was in high school, I had already exhausted the home library
all the books. So then the next step was to go to the local district library and enroll into the library system and get a membership. And after that, they used to give us 2 books to learn. I mean, one time you are allowed only 2 books. So I used to visit the library every other day, and I used to finish 1 book a day. As you might have guessed, I did not have any friends. I did not. I was a lonely child, hopefully. Uh, uh, and then during those days, we had a good circulation of Russian books published in Russia and translated into Assamese, published by Radoga publication. So those Russian books, kind of my early introduction to the book as an artifact. I mean, when I became publisher, the first thing I wanted is that the content is important. It's the key to a book, but how the book looks as an artifact, as a product, it's equally important. And then I remember why this is, because the Russian books that I read, the kind of production, the kind of paper they use, kind of printing they use, the colors, the illustrations is fantastic. So among the book, I still remember reading, I think, Mikhail Solokov's And Quiet Closed That Down. And then one poet, now people don't remember him, called Rasul Gamzatov. So here is one poem that I still remember, but I don't remember everything, so I had to go to internet and then find it. So here is a poem by Rasul Gamzatov that sort of inspired me greatly when I started writing poetry. And the poem goes like this. There are 3 treasured songs. There are 3 treasured songs at the people and in its human grief or fun. One is the song in more, one of the song is more light of the others. It is composed of the mother over a cradle. The second 2 is the song of the mother by the arms ironing the ice chicks they sing over the coffin of the sons. And the third song is the all other songs. Then coming back to Assamese literature, so I mean, I would say, like, I have read almost everything until almost everything that was published in Assamese until 1997 when I left home. And I feel I have been very lucky that the people, the writers who inspired me during my youth, I have been able to translate their work. So I remember in 1994-95, Dr. Dhrubajyoti Bora, one of the famous Assamese novelists, he had published a short novella in a magazine. The novella was called Bhok, Hunger. I distinctly remember the feeling, how I felt. It is about the story of a Muslim migrant laborer, landless laborer, and how he went through his experience of hunger because he did not have any work and there's nothing to eat. And then what happened after that? It's a small slide book. And a couple of years back, I met the author and told him, "Sir, I still remember this story that you wrote." And he said, "Oh, the book has been translated." Then I said, "Okay, give it to me, I'll publish it." And I was so happy to be able to publish the book and introduce the book to English readership. The same way, the poet that inspired me, Hononto Tati, who won Sahitya Academy a couple of years back, I met him at a function sometime back, and I started translating him, and we published a book of his works. And recently, one of my other inspiration, Nilim Kumar, I managed to translate his work and publish and introduce his work into English. So I think I'll stop now because we have as Sir was suggesting that I should read something in Assamese. So I'll probably read a couple of poems that inspired me. One is by the well-known Assamese poet Navakanta Barua. He wrote, যেতিয়ালৈকে ভোক আৰু মৈথুন থাকে, মানুহ থাকিব, আৰু কবিতা থাকিব, মানুহৰ ৰখীয়া হয়। As long as there is desire and hunger, as long as there is desire and hunger,
humanity will endure, and poetry will stand guard as its sentinel. Thank you. And then Sanandati wrote, like the first two lines, Moi manuhor omol utsav, mur sodihe kebol joy aru joy. I am man's eternal festival. Around me, only victory and victory. And this is what literature and books means to me. Only victory and victory. Thank you. Thank you, Sharmaji. Dear friends, Sanskrit, Marathi, Dogri, Malayalam, Hindi, and Assami creators are share with his, her feelings in the stage. Thank you to one of the all. Thank you. As one of the panelists said, एक वाक्य लिखने के लिए 1000 वाक्य पढ़ने बहुत जरूरी है। और जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि जब तक दुनिया में भूख है, डिजायर है, तब तक कविता रहेगी और तब तक दुनिया रहेगी। तो ये इंस्पिरेशन हम आज के सत्र से लेते हैं। And I would like to thank Shri R. Damodaran for chairing this session, and also the panelists, Divya Jyoti Sharma, Yash Raina, Geet Chaturvedi, Lopamudra, Indrajit Ghule, Shweta Padma Satpati. Thank you all for being here this evening. We have a small photo op, so request you to just come forward.